डॉक्टर शिल्पा पांडे, प्रोफेसर खंबायत सर, सबका मैं स्वागत करता हूं क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की ओर से और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से। कार्रवाई को प्रारंभ करने के लिए हम अपने वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक महोदय डॉक्टर बिनी टॉम्स मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मैम आइए और आज के कार्यक्रम डॉक्टर बिनी टॉम्स। Namaskar. A very good evening to each and everyone present. First of all, I join Anshuman and all my colleagues at the Regional Center Bhopal in extending greetings to all of you on the National Science Day today. As you're all aware, National Science Day is being celebrated for a few years now across the country to commemorate the discovery of Raman effect by the famous scientist Sir C.V. Raman. On the Science Day, to think about science and to understand the importance of science in our daily lives and to think of the various aspects of science, programs are organized across the country in universities and colleges. Also has been organizing Science Day celebrations for the whole month now, and this is one of the concluding programs of the Science Day celebrations of the university. This year, along with NCID and the regional centers, IGNOU has organized competitions, various competitions for students on Science Day. So that is something new that has been added this year and is really commendable. And each regional center will be announcing its winners after today. So that is one thing which I would like to inform each one. This year, the theme of Science Day across the country is Global Science for Global Well-being. Now, with the Corona period having passed, and science has got a new dimension now. Understanding science has become all the more important because of the new dimensions that the Corona period has created. And this is the time it is most important that there is a need to promote scientific temper and foster innovations in the young generation, not only in the youth and the students, but in the society as well. So with these objectives in mind, the IGNOU Regional Center Bhopal is organizing this panel discussion, and we have a rich panel consisting of Dr. C.K. Ghosh, Professor Jaswant Sokhi, Mr. Santosh Pandeyji, Professor Rajesh Khambayat, and Dr. Shilpa Pandey. I welcome each one of you. It's our pleasure, and we are fortunate to have such a rich panel. All our esteemed panelists have kindly agreed to spare time in spite of their busy schedules, and we are really very grateful to each one of you. Without taking any more time, because everyone would like to listen to our resource persons, we'll listen to our resource persons. The program would be like this. Dr. C.K. Ghosh would speak first, followed by Professor Jaswant Sokhi, then Mr. Santosh Pandeyji, after that Professor Rajesh Khambayatji, and finally Dr. Shilpa Pandeyji. That would be the order of presentation. We request you to talk for 5 to 10 minutes, and after that we'll have a discussion at the end of the program. But since Professor Ghosh may have to leave for another program, if there are questions in anybody's minds after each speaker, we can definitely take those questions also. I request all our participants to keep their microphones muted during the entire program so that there is no disturbance. You can keep writing in the chat box so that we can take questions at the end. And that is how we move ahead with the program. So before each panelist speaks, I'll request my colleague, Dr. Anshuman, to introduce them briefly, and then we hand over the stage to each one. Once again, a hearty welcome to our panelists, grateful for your presence here, and to each participant on this program. Now over to Anshuman. Thank you, ma'am. We welcome Mr. Santosh Pandey sir on the dais. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की ओर से। जैसा कि मैम ने बताया कि आज हम लोग एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं
और चूंकि हमारी जो जनता है वो मध्य प्रदेश की है, तो वी विल ट्राई टू यूज अ मिक्स्ड लैंग्वेज सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल साइंस डे के उपलक्ष्य में जो पैनल डिस्कशन है, इट इज अबाउट NEP, प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड फोस्टरिंग इनोवेशंस। How NEP can promote the scientific temper and can foster innovation. For that, we have invited 5 panelists, and they are very well known in their fields. So first, we will invite Professor C.K. Ghosh. The brief profile of Ghosh sir is Dr. Chinmay Kumar Ghosh has retired from Indira Gandhi National Open University, where he has served at many various positions as Director of Regional Service Divisions, uh, which has been looking after several support services across the India. He had taught physics at the Scottish Church College, Kolkata and IGNOU. He did a PhD from Calcutta University in thin solid films while working as a scholar of CSIR at Indian Association of Cultivation Sciences. He has co-authored 11 books, 4 in areas of physics at UG level, 1 innovation in distance learning, and 6 volumes of general knowledge. He has more than 100 publications, primarily in area of physics, mathematics, education, and open distance learning in form of research papers, articles, and edited literature. He has been holding membership of several statutory bodies on different universities. After retirement, he has served as consultant at National Institute of Open Schooling, Center for Education and Technology of IIT Kharagpur, and is currently associated with several projects of NCRT. Sir, we heartily welcome you on this board and invite you for your deliberations. Please, sir. Thank you, Angshuman. Thank you, Dr. Binny Toms, for giving me this splendid opportunity of interacting with all of you and particularly with some of my old friends. I take this opportunity to extend my heartfelt greetings and regards to my fellow panelists. I'm sorry that perhaps I'll not be here to be able to listen to them because I have another program at 6:30. But what I'll do on my way, I'll put my mobile phone on so that I'm able to listen to your deliberations and also I'm able to take questions. And I'll request the organizers to give my email ID, not the one in which you have sent this invitation. That is an IGNOU ID which I should not use because I have retired from IGNOU. My email ID is very simple. I hope you'll remember. contactckg@gmail.com. I'd be very happy to receive questions on this email ID, and I normally respond very quickly over email. So, since time is very short and it is at a premium, let me begin by extending my greetings, like all of you, for the National Science Day. It's a very, very important occasion. As you know, that on 28th of February 1928, this is recorded as the official date of the discovery of Raman effect, and this date is observed as a National Science Day. And I take little pride in saying that I have done my PhD research from the same research institute, Indian Association for the Cultivation of Science. When Angshuman was reading the name, I got goosebumps because that's the same institute from where Sir C.V. Raman had done his PhD research. And at that time, there was hardly any facility, and it was located at a place where Goenka College of Commerce and Business Administration. If you go to Kolkata and if you visit that college, it's a college of Commerce and Business Administration. But just as you enter on the right, there is a podium where a photograph of C.V. Raman, not a bust, a photograph of C.V. Raman has been kept. And the students and others are at least asked to go over the podium by keeping their shoes open. That is the only way by way of which we pay tribute to C.V. Raman and the kind of effort he had taken. That's a different story. In fact, I remember all that, but time is very short, and let me try to somehow come back to the topic which has 3 key issues. One is NEP 2020, another is development of scientific temper, and another is fostering of innovation. It is very difficult to do justice to any one of them within this short span of time. Let me take up the issue of NEP 2020 and try to connect it with scientific temper.
NEP 2020 has many facets. Now, as far as science teaching is concerned, or science learning is concerned, or as far as researches in science is concerned, the particular dimension of NEP which has attracted me the most is its focus on experiential learning, learning by way of experience. And I think let me concentrate on that. Let me not try to bring in too many issues and make up a mess. Experiential learning. Now, what is exactly meant by experiential learning? That is learning through experience. Now, I'm bringing in a statement made by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was not a scientist, but scientific temper is not really the monopoly of a science student or a scientist or a researcher in science or a teacher in science. It's a way of life. And experiential learning is also same. Swami Vivekananda once said that experience is the best teacher. It is through experience we learn. We learn through smiles and tears. And there is a tremendous resemblance in the manner in which experience was described by Charles Chaplin. You must have heard about Charles Chaplin. Many of you must have seen his films like City Lights, The Great Dictator, Modern Times, and so on and so forth. And they have stood the test of time. Why? Because they will make you giggle with laughter. But towards the end of the movie, say it's a 2-hour movie, so you'll be laughing for 1 hour 50 minutes, but for the last 10 minutes, it would make you weep. It has happened with every film. Now, Charles Chaplin, in his autobiography, describes at page 40, I still remember, a particular incident in his life. In front of his house, there was a road through which flocks of sheep were taken. And on one such day, 2 shepherd boys were moving with the flocks of sheep. But then one sheep got entangled in its own legs and it had fallen. And so the queue of the sheep that had gone into total disarray. And as it happens, it created a very hilarious situation and everybody started laughing. And Charles Chaplin was no exception. And then the Shepherd boys had a very tough time in managing the whole show, but somehow one of them could manage to get hold of the errant sheep, took it out of the flock, and then he started running with it. And by the time he started running with it, the flock also came into a proper shape. But then when he started running with it, Charles Chaplin had the realization. He didn't realize it on the other days. He rushed to his mother, hugged his mother, and said that, "See, they are going to kill it. They are going to kill it." And he started weeping. And he says that this particular experience has got impregnated in my life. It has become a lesson. And so it has also become a lesson for all my films which I had prepared. They are all mingling of smiles and tears. So see what experience does to us and what we are doing with experience. The best field for experiential learning for a science student is perhaps a laboratory. But what are we doing with the laboratory? I'm being a little blunt and harsh about it. And all my colleague science teachers, all my fellow panelists will perhaps agree with me that science practicals are not being given the importance that is due to it. You go to any school or college, even the guardians will come. I have heard guardians come to the schools and they say that why you worry about those 30 marks. This practical examination is held in the school. So you give them 28 out of 30, 29 out of 30. Why you bother about that? Give them more lesson in theoretical, which will take them which will make them prepare for the IIT or other joint entrance examinations. What is the importance of doing practical? And what is happening, particularly I can tell about my subject physics, that it is gradually getting relegated to a theoretical discipline. So this is one area where I'll request all those who have joined in this particular panel discussion. In fact, I'm sorry I forgot to extend my thanks to Regional Center Bhopal, who had given me the splendid opportunity to share some of my thoughts on scientific temper and NEP 2020, that science
practical is something which teaches us scientific integrity. It teaches us to question. C.V. Raman had questioned why is the ocean blue during his trip to Europe. He had seen the ocean blue, and the existing explanation at that time was due to Lord Rayleigh, who had very carefully and very meticulously explained the reason behind the blue of the sky. And he said that we see the reflection of the sky in the ocean, and that's why the ocean looks blue, which was not accepted at all by C.V. Raman. And then what he did is history. He had raised that question, and that was all important for him to probe. So, questioning is the most important facet of development of scientific temper. Now, what are we doing in the laboratory? Normally, the students will do a routine exercise in the laboratory. There are several experiments. Of course, I'm talking mostly about physics experiments because that is where I have a direct experience. The student who has done a particular experiment on the previous day will be asked by his friends that what was the data, how much current you have taken, how much voltage you have taken, and so he will not try to explore himself. Normally, he will not try to explore himself. And then there is lack of scientific integrity. In the laboratory, we are supposed to use a notebook called laboratory notebook. And very excellent varieties of laboratory notebooks are sold these days at the stationery shops. I wonder why those things were not available during the time we were students. They are very nicely designed, nicely laid out laboratory notebook. But what does it mean? In the word laboratory notebook, the word laboratory is an adjective, and it describes a notebook that it is a place where the notebook has to be used. So it says that it is a notebook which has to be used in the laboratory. But let the teachers tell with hand on their body. Do they agree? Do the students really use the notebook in the laboratory? Definitely not. They do it in a so-called rough notebook. They scribble on a rough notebook, take it back home, and take the data from the rough notebook to the so-called fair notebook, because the teachers are more concerned about keeping it tidy. Now, making a line through does not make it untidy. And it is not my version, it is a version of a famous teacher of physics practical, G.L. Square, S-Q-U-R-E. S-Q-U-I-R-E, G.L. Square. He says that copying is a wastage of time. Number two, there is every possibility of committing a mistake when you copy from one notebook to another. And the third thing is there is an irresistible temptation of being selective. That is, say you are doing an experiment on Ohm's law, the I versus V curve will be a straight line. And you get 10 points, out of which 5 are on straight line, 5 are not. So without making any kind of thought, without sparing any kind of thought, you remove those 5 points. So what you are doing, you yourself have observed those 5 points, and so you are disrespecting, you are disregarding, you are making the data you have taken inadmissible. What we will do when you are asked to give a witness at the court? You have witnessed something and you are not ready to record it. So this is where the laboratory is the best place where you can make them develop scientific temper. In fact, we are doing a series of workshops. I'm feeling very tempted to share all those experiences with the students and the other participants today, that we call them and make them perform experiment anywhere, not necessarily within the laboratory. We make them perform several direct experiments. We have done even evaluation during the Corona period. So all these things can be done. And as I told that, let me concentrate on one issue of experiential learning, that let us once again bring in this essence of experiential learning through doing practicals as far as sciences are concerned. Let the students be encouraged to do practicals. And we have to think something about evaluation, how it can be made properly evaluation worthy. You know, during the Corona period, the students
could not do practical during their higher secondary classes. Even irrespective of the corona period, even earlier than that, we have seen particularly students coming from the rural schools, and they hardly get any facility of doing practicals in their schools, and they have tremendous difficulty in coping up when they go to the honors class. So we had conducted a workshop at this very place, Indian Association for the Cultivation of Science. And on the last day during the valedictory session, this is something which I shall never forget. One of the students, when they were asked to give him their feedback, they were saying that we were benefited and all. But one of the students said that, "Sir, please tell this to our guardians that practicals are important." One of the students said that, "Please tell this to our guardians that practicals are important." So I concentrated within the constraints of time. I concentrated on this one particular issue. I tried to harp this on your mind that science practical is extremely important. See, for the joint entrance examination, the student is examined on mathematics, physics, chemistry, biology. These are all, except mathematics, of course, are even mathematics is a practical based subject. So they are all practical based subject, but they are not tested on their practical competence. Why so? We have to think of method, and this will bring in the essence of experiential learning, and with its connectivity with scientific temper, it would be able to develop scientific temper. I should not prolong my deliberation. In fact, development of scientific temper is one of the very important facets of our Indian constitution, and we should be proud about that. We should take pride that it is the only country which has very clearly spelled out in item 51A clause 6 as the duty of citizen for developing scientific temper, spirit of inquiry, and scientific humanism. This is enshrined in our constitution, and I hope that we all take measures and step to do justice to these diktats of our constitution. Thank you so much for giving me a patient hearing and giving me this responsibility. Thank you, Dr. Ghosh, for a wonderful lecture. I should not say lecture, but you've given us, because in the limited time that you were given, you've given us a lot of food for thought. It's always a pleasure to listen to you, sir. Lot of things, the importance of practical component when we talk of science, experiential learning, and of course, research integrity when we talk of science. How much do we concentrate on the laboratory work that science students do or are supposed to do? Or it sometimes remains as a mere formality of copying it in practical notebooks from the observation book or the rough copy that they use in their laboratories. Thanks, sir, for giving us a lot of food for thought. And when we talk of NEP 2020, scientific temper is something that is an important aspect, and connecting it to the practical component and experiential learning, you have definitely done justice to your job. Thanks a lot. And I request you to stay for some more time, and then definitely stay connected on the mobile. And we will, I hope you'll remain with us through the entire length of the program. Thanks a lot, sir. The place where I have the program, I'll not be able to reach. You know the condition of Delhi roads. I'll not be able to reach before 6:30, but I'll keep myself connected. I'm sorry that I'm leaving now. I'm not able to listen to others' deliberation. I would have been very happy to take part. In fact, 20th February is such a day that you have so many programs lined up on the same day. So, but I'll definitely remain connected through the mobile phone. My apologies once again to my fellow panelists, and my heartfelt thanks to the organizers for giving me this opportunity. Thanks again, sir. Thanks a lot for joining us. Thanks a lot. Now I request Professor Jaswant Sokhi, and before that, over to Anshuman to introduce ma'am to the gallery. Thank you, ma'am. I would like to welcome Professor Jaswant Sokhi, ma'am. Basically, she is a botanist. She hails from a discipline of life sciences. She has done BSc, MSc in botany in 1978, then MPhil botany, and thereafter PhD botany from University of Delhi.
She has a varied of teaching experience. She taught in Kalindi College, in Miranda House, and there after she joined Indira Gandhi National Open University and retired from there as a professor of school in School of Sciences. She has been associated with the development of various bachelor's degree programs, certificate programs, and BSc General and honors in botany, studies, laboratory technology, environment and sustainable development, appreciation course on environment, and introduction to the environment, as well as the bachelor's of arts in tourism studies. She has been handling many projects, and well as she has been a member of several committees. Her area of interest is ecology, environmental studies, development biology, including plants, genetics, biodiversity. She has published scores many papers which has acclaimed international and national fame. She has been contributing to several corporate drives of IGNU as a chairperson, as well as she has been teaching, guiding ODL learners in various aspects of science. We welcome Professor Jason Soki ma'am to this board. Ma'am, the mic is over to you. Very good evening to all the participants. Many grateful thanks to Dr. Vinny Thomas, Dr. Anshul Patel, and so many learned persons who are part of this deliberation. I'll try to be very, very short because after what Dr. Ghosh has said, I don't stand to him. I always address him as a respected sir. He has always been guiding me when I was in it. And really being a part of IGNO is it coming up as an NEP plus university, which has its presence spread all over the world. One feels very happy because as I joined in 1987 and retired in 2020, there has been a phenomenal growth. And especially it has created that foundation course in science and technology, FS1. That's very, very unique. And that is still very, very relevant. It has been prepared by best of the people in the country from various walks of life. And it was edited by Professor Rais Ahmed and director Professor Shakti Rais Ahmed. And so many scientists were part of that whole program, whole course. First of all, today's theme is global science or global well-being. It's a very, very loaded topic, but very, very relevant one. One is global, then science, then global well-being. Vasudev Kutumbakam. Everybody, not only beings, everybody, right from bacteria to the highest uh, animal, I mean, biggest animal, everybody is a part of this web of life. To quote Raman, the essence of scientific spirit is to realize what a wonderful world is that we live in. In fact, Dr. Professor C.V. Raman, who was awarded Nobel Prize in 1930 for his studies in Raman effect, that is, the light the oxygen colors and in fostering innovation. So, some of the points he says science is the study of knowledge about physical world and the natural laws. The main essence and main elements of science are it is verifiable, it promotes hypothesis, then there is experimentation, observation, verification, and conclusions. So verification is for everyone to test and at any point of time, anywhere in this world, and even outside the world, this planet in the space. So it's a collective endeavor. So many scientists pool together and they share their work in an open manner. It's a saying that the more you share, the more it grows. If we just keep it narrowed down or locked, so we can't progress much. So you might have seen many papers coming in Nature. We have several
authors. There are about 50 authors, then some substantial amount of knowledge has been generated. So there is a method of science. It has to be done in a very systematic manner, and how it is done is shared with everyone. As Professor Ghosh said, that experiential learning is a component of scientific learning. So, what is science about? What is science for? Science today has to be multidisciplinary, and it aims to solve the problems or challenges faced by society all over the world in terms of food security, health, quest for new knowledge, and understanding new phenomena, new challenges or issues that we keep on coming across throughout the life. And for present times, energy is a very big issue. How to meet with the energy requirement. So now just coming to the topic, it is global science. Again, everybody across the world, they openly share their link with each other through various communication modes, and they share their findings. Initially, it used to be through post, but now every day you can, in an instant, you can connect uh, to the various researchers working in your field, and then they work for the cause of for global well-being, not only for human beings, but every individual, whether it's a bird or a bacteria or a virus, anybody. So now just how to promote scientific temper means scientific temper is a way of life. I mean, how to encourage that people do it scientifically. Social science is also a science which is it has a different kind of a component in it. Whereas science is done in a very open manner in which students or any human beings they are encouraged to perform certain experiments in their own way, by their own resources. We need not have very, very large resources. Recently, one read about a school girl who was pedaling a cycle, and she had a cylinder at the back on the carrier, in which by the air pump, the cylinder was filled with air, and there was a piston operating through it, and the pressure generated helped the cycle to run effortlessly. So that got the attention of many other people working in this area, especially the automobile sector. So instead of using petrol or any solar energy, only the wind energy, how it is compressed and the cycle is run effortlessly. So this is how the students need to be encouraged and given space and time and uh, keeping their spirits high, not only the parents, but the teachers, but the fellow beings. Cooperation is very, very important element of scientific endeavor. So this is what briefly I would like to say. And the essence is one has to work in cooperation across the globe, not only in the country, say in the city Delhi, then across the country, and then across the world. We are connected to each other. We learn, we perform certain mistakes, certain follies, we correct ourselves, we increase our knowledge, we create knowledge, we put it in the open domain for others to test, verify, use it, and expand it further. So with these words, I'm there with you, and thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you. Thanks to Professor Jaswant Sokhi. Thanks, ma'am, for a very thought-provoking message on this day, talking about global science for global well-being. That was what you focused on, and definitely experiential learning and promoting scientific temper is a part. Thanks for your words, and which has come from your experience of working with science and students over the years. Thanks so much. Thank you so much. Thank you. Do stay with us. I'm sure your message has arisen questions in the minds of our listeners. So definitely we'll have good interaction on your message also. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank you. Now we'll call Santosh Pandeji for his message and for his inputs. Over to Anshuman to
to introduce him to our participants here. बहुत बहुत धन्यवाद सोखी मैडम। अब हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर संतोष पांडे जी, बहुत ही बड़ा नाम है सर का। सर ने बहुत सारे कार्यों को संपादित किया है, जिसमें जो मुख्य कार्य है वो अभी वर्तमान में सर जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक नीतियां हैं उनको बाहर तक ले आते हैं मीडिया के माध्यम से। तो सर का मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताता हूं। सर इज अ वेरी सीनियर मीडिया पर्सन. He is from media and communication profession, and he has launched and led 4 pioneer regional satellite channels in Hindi heartland: ETV UP, ETV Bihar, ETV MP, and ETV Rajasthan. Headed Mahua Media Network, and it's a bouquet of 3 leading info entertainment channel as editor-in-chief. He has been a regular contributor to science through Vigyan Prasad Department of Science and Technology, Government of India, in its mission to spread and instill scientific temper through different media. He has been jury and a member of National and International Science Film Festival of India. Regular participation in various, he has been participating in various forums as panelist and as a resource person for media capacity and for capacity building in various workshops. सर का बहुत ही लंबा अनुभव है इसमें, और सर ने अभी जो वायर है उसके मैनेजिंग एडिटर हैं. India Science Wire, a news and a wire service dedicated to reporting India's scientific and technological advancement. He is working as its managing editor. सर को एक बार क्षेत्र केंद्र भोपाल की ओर से फिर से हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं अपने विचारों को इस मंच पर रखने के लिए. श्री संतोष पांडे सर. बहुत धन्यवाद अंशुमन जी. जी सर. At the outset, I must thank IGNOU Bhopal Regional Center for this opportunity, and it is always a pleasure and it's always an honor to be amongst such luminaries from across various fields. And what excites me the most is the fact that we are also talking to youngsters, those who are going to take the baton forward, and to that effect, it's a very big day as we celebrate National Science Day today. And Professor Ghosh had spoken at length about all the importance and other facts associated with Professor Raman and the Raman's theory and how it had changed the world. And to give you just a brief, addition to what he delved at length at, was the fact that we are using this GPS today. Everybody here on this panel will have a mobile phone, and every mobile phone is equipped with GPS. It is all because of Raman's discovery that we are able to use this today, and it gives such a convenient, forum to connect from across different geographies to talk about one aspect. Had it not been for this technology, possibly we would not have assembled today. Someone's mic is on. Can we have the all microphones off when the speaker's mic is on? Thank you. Now, talking about the importance of the day, and especially in the context of new education. Anshumanji, you want me to speak in English, or what do you suggest? What would be रहेगा सर? मिक्स रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को इसको भेजना है. No, I am going to speak either in English or Hindi. My Hindi would no way be less, beautiful than Queen's language. So you rest assured. हिंदी ही अच्छा रहेगा सर. सुनना चाहेंगे सर आपके मुख से. अच्छी बात. तो मैं
मतलब आई जस्ट वांटेड टू चेक एंड विद परमिशन फ्रॉम बिनी मैडम, मैं चाहूंगा कि इन दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, जो लैंग्वेज सबको आती हो उसमें बात हो तो अच्छा है, और ऑफ कोर्स अगर बोलने वाला बोल सके तो आज के लिए यही है कि ये जो नई शिक्षा नीति 2020 की जब अवधारणा सामने आई है, तो वो पुरानी शिक्षा नीति से किस रूप में भिन्न है? वो इस रूप में भिन्न है कि इसमें पहली बार इस पक्ष को लेकर एक प्रयास और एक दिशा दिखाई देती है, दिशा को लेकर चिंतन दिखाई देता है कि स्कूल लेवल पे ही, मतलब आरंभिक कक्षाओं, प्राथमिक कक्षाओं में, क्लास 3 तक की कक्षाओं में जिन 3 पहलुओं पे फोकस है, जिस पर मुख्य जोर है, वो बच्चों में, क्लास 3 तक के बच्चों में खास तौर से न्यूमेरिक्स को लेके जो अंकों से जुड़ी हुई जो समझ है और जो बुद्धि है, उसको इनकलकेट करना है, उसका बीजारोपण उनमें हो जाए, इस बात पर एक विशेष फोकस जो है उसमें दिया गया है, जिसको फाउंडेशनल लिटरेसी के अलावा, मतलब जो प्राथमिक साक्षरता के अलावा अंकों की समझ भी जगाने पर खास जोर जो है वो दिया गया है। ये उसके बीज हैं, उस वृक्ष के बीज हैं जो आगे चलकर उस मस्तिष्क को शेप करने का कारण बनेंगे, उसका सामान बनेंगे, जो मस्तिष्क एक परिपक्व वैज्ञानिक का मस्तिष्क होगा, जो भारत की समकालीन चुनौतियों, भविष्य की चुनौतियों और वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला मस्तिष्क तैयार होगा, जिसकी चिंता मानव के प्रति होगी, मानवता के प्रति होगी, मानव कल्याण जिसका उद्देश्य होगा, लेकिन उसके साथ ही साथ वो अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से न सिर्फ वो विज्ञान को आगे बढ़ाएगा, बल्कि साथ ही साथ जो व्यापक जनमानस है, खासतौर से भारत जैसे देश में, इतना विविधतापूर्ण यह देश है, और ये विविधता केवल संस्कृति और खान पान और वस्त्र और इन्हीं सब मूल्यों में नहीं केवल छुपी हुई है, उसका एक बड़ा विविधता हमें शिक्षा के दायरे में भी दिखाई देती है। तो हमें इस स्थिति में पहुंचने के लिए, जहां देश में विज्ञान को लेकर होने वाले शोध, विकास एवं अनुसंधान में देश की जो भी पूंजी लगती हो, देश का जो भी धन जाता हो, टैक्स पेयर्स का जो पैसा उसमें लगता हो, उसको लेकर जनमानस में एक समझ भी होनी चाहिए कि ये किस कार्य के लिए, किस रूप में ये धन जो है वो आवश्यक है, किस रूप में ये धन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, और कैसे विज्ञान बदले में फिर उन मुद्दों को एड्रेस करेगा, उन विषयों को से अपने को जोड़ेगा जो जन कल्याण के विषय होंगे। तो इस समझ के मद्देनजर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये आवश्यक है कि जनता सरकार के स्तर पर किए जाने वाले आयोजनों से अपने को जोड़ के देखे, और उसमें ये एक समझ बने कि ये जो कुछ किया जा रहा है, अगर हम चंद्रमा अभियान चला रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, ये किस रूप में देश को, जनता को किस रूप में ये आकृष्ट करे। अगर हमारा मंगल मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो इसने देश को किस प्रकार से लाभान्वित किया है। इन सारी समझ को बनाने के उद्देश्य से हम विज्ञान पढ़ें या कोई और विषय पढ़ें, हम साइंस ही पढ़ें ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हम साइंस के महत्व को समझें, साइंस के प्रति हमारा दृष्टिकोण साफ और स्पष्ट हो कि हम साइंस को, विज्ञान को अपने भले के लिए होने वाला एक उपक्रम माने। इस मनोदशा को तैयार करने को व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का निर्माण से जोड़कर देखा जाता है। अब ये जो शब्द है साइंटिफिक टेम्पर, ये साइंटिफिक टेम्पर, अभी मैं प्रोफेसर घोष को सुन रहा था, एक्चुअली वो
संविधान में 1976 में 42वें संशोधन, अगर मुझे ठीक याद है, तो उस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51AH है, वो 51AH के तहत देश में वैज्ञानिक मनोवृत्ति निर्माण को नागरिक कर्तव्यों के रूप में रेखांकित किया गया है। और ये वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है? वैज्ञानिक मनोवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि सब लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ें। उसका अर्थ ये है कि नागरिकों में प्रश्न करने की क्षमता पैदा हो। आप किसी चीज को स्वीकार करने से पहले प्रश्न करें, आपका दृष्टिकोण तार्किक हो, आप किसी भी रूप में, किसी भी ढंग से किसी भी चीज को स्वीकारने में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें। गणेश जी दूध पीने लगे, अचानक खबर फैली, लोगों ने दूध पिलाना उनको शुरू कर दिया। अब ये जो घटना थी, ये एक मास हिस्टीरिया का एक ऐसा उदाहरण था जिसमें कोई ठहर के इस प्रश्न पर ऐसे विचार करने की स्थिति में नहीं था कि क्या ये संभव है, या अगर ये संभव है तो किस तरीके से संभव है। तो जो क्वेश्चन करने की क्षमता है, आप तर्क करें, प्रश्न पूछें, आप में जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात उसमें कही गई है, वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यही है कि आपको कोई भी स्थिति यथारूप स्वीकार नहीं होनी चाहिए। आप उसको जानें, समझें और फिर स्वीकार करें। तो इसके तहत उस मनोभाव को पुष्ट करने के लिए अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो ये नई शिक्षा नीति उसकी तरफ बढ़ने का एक जमीन तैयार करने की चेष्टा है। जैसा मैंने कहा, विज्ञान बतौर विषय प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों तक ही सिमटा हुआ विषय मैं नहीं मानता हूं। उसके बाहर भी ऐसा बहुत कुछ है जो इसकी परिधि में आकर खड़ा होता है, उससे लाभान्वित होता है, उसके प्रति सहानुभूति रखता है, उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। उन सारे विषयों का भी महत्व है उसी रूप में जिस रूप में जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी थी। उस किताब में पहली बार ये शब्द आया, और जवाहरलाल नेहरू ने जिस रूप में साइंटिफिक टेम्पर की बात की थी, वो दरअसल विज्ञान विषय की बात नहीं थी। वो साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है, ये एक मानव सुलभ गुण है जो हर व्यक्ति में होना चाहिए, जो हर बच्चे में आना चाहिए। और उन गुणों के आधार पर आप एक बेहतर नागरिक होने की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से वो पहली बार वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था जहां से ये लिया गया है। रही बात विज्ञान विषय के साथ इसको जोड़ के देखने की, तो हर वैज्ञानिक विज्ञान जो है उसको मेरी परिभाषा अगर मैं दूं तो विज्ञान को मैं सत्याग्रह मानता हूं। वो सत्य का आग्रह है, और वो सत्य जो होता है वो परपेचुअल होता है, अंतिम सत्य कुछ नहीं है। विज्ञान किसी भी स्थिति को अंतिम मानकर काम छोड़ता नहीं है, उसको लगातार काम करना होता है, लगातार शोध, अनवरत विकास। ये विज्ञान की यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें कहीं कोई गलती सही की बात ही नहीं है, ये लगातार इवॉल्व होता है। तो ऐसे में, ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वैश्विक चुनौतियां, आजकल बच्चों को प्राथमिक लेवल पे और कुछ पता हो ना हो, लेकिन इतना पता है कि पर्यावरण संकट गहरा रहा है। उसको इतना पता है कि पानी कभी भी खत्म हो सकता है। उसको इतना पता है कि पेट्रोल के बिना गाड़ियां कभी भी खड़ी हो सकती हैं। ये जो स्थितियां बनी हैं, इन पूरी स्थितियों के पीछे जिम्मेदार कौन है? वो मानव गतिविधियां जिम्मेदार हैं। उसमें कई गतिविधियों में प्रौद्योगिकी और विज्ञान का भी योगदान है, जिससे बहुत वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन उस चुनौती से निपटने की सामर्थ्य भी इसी में है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक परिदृश्य में लगातार उभर के आ रहे तमाम चुनौतियों के मद्देनजर
हमें ये आवश्यक है ये देखना कि न सिर्फ विज्ञान इस भाव से आगे बढ़ता रहे कि वो मानव कल्याण का निमित्त है, वो अपने सामने मानव जाति के समूह के आगे खड़ी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े, और शेष लोग, पूरा बाकी समाज, दुनिया, पूरी आबादी विज्ञान के प्रति समर्थन और सहानुभूति का भाव रखे, आश्वस्ति का भाव रखे, इस रूप में कि उसने अपने मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति द्वारा ये समझ बना ली है कि विज्ञान जो भी कर रहा है वो अल्टीमेटली उनके लाभ के लिए ही कर रहा है। इससे पूरा वैश्विक समुदाय लाभान्वित होगा, और वैश्विक समुदाय के लाभान्वित होने में इस वर्ष की जो साइंस डे की जो थीम घोषित की गई है वो अपने में एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो सत्य है इस रूप में कि वो इस साल नहीं, वो हर साल की थीम हो तो भी चलेगा, क्योंकि विज्ञान जो है वो लोकल नहीं होता है, रीजनल नहीं होता है। विज्ञान होता ही वैश्विक है। भोपाल का साइंस अलग है, दिल्ली का साइंस अलग है, ऐसा नहीं है। हंगरी में कोई और विज्ञान है और पोलैंड में कोई और विज्ञान है, ऐसा नहीं है। विज्ञान विज्ञान है और वैश्विक ही है। तो एक अच्छी बात यह है कि कोई भी विज्ञान को लेकर आगे बढ़ने वाले जितने वैज्ञानिक हों, शोधकर्ता हों, इन सब लोगों के सामने सबसे बड़ा जो पहलू है इस काम का, मुझे तो यही लगता है कि वो जाने अनजाने एक वैश्विक ज्ञान कोश को ही समृद्ध कर रहे होते हैं। उनका ज्ञान इस रूप में किसी लोकल लेबोरेटरी में सिमटा हुआ दिखाई भले ही देता हो, लेकिन वो अंततः पूरे वैश्विक ज्ञान कोश में श्री वृद्धि करने का वो काम करते हैं। इस रूप में मैं समझता हूं कि आज का ये जो आयोजन है, इस आयोजन में इतने सारे विचार सुनने को मिल रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति और आने वाले भविष्य की चुनौतियों के बीच में ये जो वैज्ञानिक मनोवृत्ति के निर्माण का जो प्रश्न है, ये किस रूप में महत्वपूर्ण है, इसको छोटे से एक छोटे से गोले में मैंने घेरने की कोशिश की है। मेरी क्षमता कितनी कम है मैं जानता हूं, और ये विषय कितना व्यापक है इसकी भी थोड़ी समझ मुझे है। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, फिर अगले किसी पहलू पे अगर समय रहा तो चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए। अंशुमन, मेरे कलीग अंशुमन और मेरे बाकी इग्नू आरसी के सारे कलीग्स अभी मतलब खुश हो रहे हैं कि हमने ऐसा उम्दा पैनल सिलेक्ट किया है जिसमें इतना व्यापक विषय होने के बावजूद हर एक वक्ता बहुत अहम मुद्दों को उठा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को हमारे पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स में इस समय फैकल्टी है, इग्नू के कोऑर्डिनेटर्स है, रीजनल सेंटर के अधिकारी है, इवैल्यूएटर्स है, और साथ ही छात्र भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से सभी ने अपनी बातों को कहा, जो हर ग्रुप जिसको समझ सकता है इस तरह से प्रेजेंट किया। आपने बहुत अच्छी बात कही पांडे जी कि जो प्राथमिक शिक्षा ले रहे हमारे नन्हे विद्यार्थी हैं, उनके मनों में अंकों का ज्ञान, विज्ञान, उसका महत्व, इन बातों का बीज बोने की जरूरत है। और नई शिक्षा नीति 2020 कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश करने का संकेत दे रही है। और हमारा ये टॉपिक कि प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यही से है कि इन नन्हे विद्यार्थियों के मनों में ऐसा बीज बोना, ताकि आगे जाकर के ये इस तरह का एक एनवायरनमेंट साइंस को लेके, विज्ञान को लेके बने। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हमारा ये पैनल डिस्कशन और इंटरेस्टिंग ही होता जा रहा है। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, हमारे स्टूडेंट्स किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि अब थोड़ा सा शाम भी हो गया है, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पे वो कभी भी इसे देख सकते हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पांडे सर। और इसी के साथ मैं
अंशुमन से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे अगले पैनलिस्ट प्रोफेसर रमेश खंबायत जी को का इंट्रोडक्शन देकर उन्हें आमंत्रित करें। ओवर टू अंशुमन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू पांडे सर, आपने हिंदी में अपने वक्तव्य को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो बताया, मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जनता, खासतौर विद्यार्थीगण इसको जरूर से समझेंगे और हम लोग इस YouTube लिंक को सभी विद्यार्थियों को प्रसारित करेंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं वो डॉक्टर राजेश पी खंबायत सर हैं। डॉक्टर राजेश सर इज अ फुलब्राइट स्कॉलर। इन्होंने 2014 में फुलब्राइट स्कॉलर थे एंड प्रेजेंटली होल्ड्स द position of professor in Department of Technical and Vocational Education and Training at National Institute of Technical Teachers Training Research, NITTTR in Bhopal, India. He was formerly the Joint Director of PSS, Central Institute of Vocational Education, Bhopal, which is a constituent unit of NCERT. He has worked as individual consultant with UNESCO, Bangkok, and UNESCO UNEVO, International Center for Bonn, Germany. He has been involved as an international specialist, skill standards and curriculum for Asian Development Bank and funded TVET project in Cambodia. In addition, he has served as an international faculty consultant for 3 years at Colombo Plant Staff College for Technical Education, an intergovernmental and international organization in Asia and Pacific region based in Manila, Philippines. He is a certified international accreditor of the Asia Pacific Accreditation Certificate Commission, Philippines. He has been actively involved in various joint activities of UNESCO, CPC, ZIZ, Germany. Sir is on leave presently. He's in hometown, but still he agreed to join this panel discussion. So once again, we welcome you, sir, on behalf of IGNOU Regional Center Bhopal and invite you for your deliberation, sir. Dr. Rajesh P. Khambayat, sir. Thank you. Thank you, Dr. Anshuman ji. All the fellow panelists joining today on a very important day. And most importantly, all the listeners, participants of this webinar. First of all, let me thank IGNOU for thinking about me and inviting me to be a part of this important panel discussion. मैं अगले एक 5 to 7 मिनट्स में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहूँगा, अगर आपकी अनुमति हो, to quickly summarize the deliberations which I wanted to make. Yes, sir, please. Give me 1 minute just. Can you see my presentation? Can you please confirm? आप देख पा रहे हैं? Yes, it is visible. Okay, thank you sir. मेरे ख्याल से आज का जो विषय है हमारा प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट, इनोवेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दिशा में द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसने क्या मार्गदिशाएं दी हैं और कैसे हम इसको कार्यान्वित कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अपने बात रखना चाहूँगा. Friends, if you look at the most innovative economies across the world, and you will find that on the top it is South Korea, Singapore, Switzerland. Of course, these are the figures which are available from 2021. But nevertheless, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो इनोवेशन इंडेक्स है, we have jumped 35 places within the last 6 years from position of 81 to 46. मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक दिशा हमको बताता है कि हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग एंड पुशिंग द एजेंडा ऑफ प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशंस. ये जो नई शिक्षा नीति आई है, आप अगर इसको देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि रिसर्च और इनोवेशन का शब्द जो है उसका लगभग 170 times has been mentioned in the small document of around 60 to 70 pages of NEP 2020. मेरे ख्याल से ये अपने आप में दिशा दर्शाता है कि हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड particularly मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज थिंकिंग ऑन प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, particularly थ्रू एजुकेशन सिस्टम. NEP जो है उसकी एक कोशिश की गई कि हम ऐसी एक इकोसिस्टम क्रिएट की जाए कि जिसके माध्यम से रिसर्च और इनोवेशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रमोट किया जाए.
हम सब जानते हैं एजुकेशन एक वाइडर पर्सपेक्टिव में हमको देखने की आवश्यकता है। एजुकेशन नॉट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, बट एजुकेशन हैज अ लार्जर पर्पस, जिसको हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। Education can enhance the employability of the graduates, enhance employment prospect for the graduates, and most importantly, entrepreneurship. मेरे ख्याल से जो स्पेशल एम्फोसिस है, क्योंकि हम इग्नू की बात कर रहे हैं और खासतौर से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें खासतौर से ये कहा गया है ऑन नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन एंड देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल इकोनॉमी। तो केवल विद्यार्थियों में विज्ञान का प्रसार नहीं करना है हमको, लेकिन हाउ ऑल दिस कैन लीड फाइनली टू द नेशनल इकोनॉमी हैज बीन द फल्क्रम ऑफ द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसका विजन हम सब जानते हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, इसको लेकर नई शिक्षा नीति में अपनी बात रखी है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रिंसिपल जो है वो मुझे लगता है आज के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रखता है। इसमें कहा गया है कि टू आइडेंटिफाई एंड फॉस्टर यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट बाय प्रमोटिंग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, टू एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशंस। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये नए शिक्षा नीति के तहत हम लेकर आ रहे हैं। कई सारे सुझाव शिक्षा नीति में कहे गए हैं, बट खासतौर से हायर एजुकेशन में इन बातों को विशेष महत्व दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आने वाले दिनों में स्टार्टअप या इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सेंटर इन फ्रंटियर एरिया। सर स्लाइड्स आपकी मूव नहीं हो रही सर। ओहो, Have you seen the last one? नहीं, अभी तक नहीं सर, वो इट वाज द फर्स्ट स्लाइड। हाँ यस, एक मिनट, फुल स्केप कर दीजिए सर, फुल स्केप। फुल स्क्रीन कर दो, अभी दिखाई दे रही है? हेलो सर दिखाई दे रही है, बट वो स्लाइड मूव नहीं कर रही थी सर। यस, नाउ इट इज मूविंग। स्लाइड शो मोड में डालिए सर, ये स्लाइड शो मोड। अभी देखिए, अभी अभी मुझे लगता है काफी ठीक होगा। ठीक है? Yes, sir, it's working now. Yes, sir. Continue. Please continue. ओके, ठीक है। ये थोड़ा गूगल मीट में प्रॉब्लम आती है अक्सर। Should I repeat? Is it okay for a few minutes? No, it's okay, sir. Okay. You may continue from where you left. Yeah, okay. तो देखिए, खासतौर से शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। सेंटर्स इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ रिसर्च, आप सब जानते हैं इतने सारा डाइवर्स एरिया है रिसर्च के लिए हमारे पास, एंड दिस विल बी द अपकमिंग फील्ड जिसमें इस एरिया में रिसर्च किया जाएगा। जैसे नैनो मटेरियल की हम बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, बायोमेडिसिन की बात करें, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक सेंटर फॉर इंडस्ट्री एंड एकेडमिक लिंकेजेस विल बी एस्टैब्लिश। और सबसे आखिरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। सो रिसर्च केवल अपने अपने फील्ड के नहीं, बट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस वगैरह के रिसर्च में जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। जब हम शिक्षा का बजट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एनुअल बजट जो है इस वक्त अराउंड 4.43% ऑफ आवर जीडीपी इज देयर फॉर एजुकेशन। और कोशिश की गई है इस पॉलिसी के द्वारा इट विल बी रेज अप टू 6% ऑफ जीडीपी इन द कमिंग ईयर। क्योंकि आज हमारा विषय रिसर्च और इनोवेशंस का है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो करंटली around 0.7%, to be more precise 0.69% of the GDP is invested for research and innovation. अगर हम कॉन्ट्ररी जो डेवलप कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे इजराइल जैसा कंट्री है, उसमें ऑलमोस्ट 4.3%
is invested of GDP for research and innovations. South Korea 4.2% is invested, whereas in USA it is 2.8. तो एक ग्लोबल एवरेज जो फिगर है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट किया गया है कि अप टू 3% ऑफ जीडीपी वी शुड इन्वेस्ट ऑन रिसर्च एंड इनोवेशंस। इसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर की बात की गई, तो मुझे लगता है कि जहां हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, जहां इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इनोवेशन सेंटर्स कैन प्ले अ फैंटास्टिक रोल, ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी, इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली जैसे हम आज आत्मनिर्भर की बात करते हैं, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। हाउ टू identify business idea, how to formulate proposals, how to approach financial institutions, how to launch your startup, how to launch your enterprise, और लॉन्च करने के बाद आपको क्या समस्या आती है, there again this incubation center will have a very big role to play. It like guiding, mentoring, hand holding, so that he or she can become really a successful entrepreneur in the years to come. And I think this is all possible when we will promote the advocacy for undertaking research. We promote the advocacy of bringing innovations, not only in the product but even service sector can have a big role to play for our students and all that. So friends, to consolidate one or two points more importantly, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये खास तौर से कहा गया है कि हाउ the learner should be able to think critically, how they should identify problem and solve those problems, how to be creative and multidisciplinary, how to innovate, how to adapt, how to absorb new material in the novel and in the changing fields and all that. जैसे मुझे बताया गया है कि हमारे यहाँ काफी सारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट थे जो एक टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि the pedagogy also has to be changed if you really want to bring all these innovations into education ecosystem. जैसे डॉक्टर घोष सर ने कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हम बात करते हैं, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द न्यू पेडागोजी व्हिच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज एडवोकेटेड. It should be holistic, not in parts and parcel. Rather, it should be holistic. It should be well integrated. It is not only for the school education system, but for the entire ecosystem of education. The national education policy talk about research and innovation, inquiry driven. Just say discovery oriented. These are all very interrelated, discovery driven and inquiry driven. जैसे उदाहरण के तौर पे हम सब जानते हैं कि आज अगर हम गार्डन अपने आसपास देखते हैं, we are hardly able to see the butterflies. We can ask the student to identify what is the reason why the butterflies are vanishing from our gardens. So this will make them realize that what are the problems the society is facing, what are the problems the humankinds are facing, and that will help them to think very creatively, very innovatively. Our focus has to be on learner centered, discussion based, rather than lecturing, and we have to be little more flexible and all those things and all that. इस दिशा में एक और प्रयास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया, एंड दैट इज माय लास्ट पॉइंट आई विल बी हाइलाइटिंग, एंड दैट इज रिगार्डिंग वोकेशनल एजुकेशन. Research and innovation brings about lots of experimentation, playing with hands, and that's why it is for the first time strongly vocational education will be integrated from secondary school to higher education in a phased manner. आप सब जानते हैं कि we are almost 1.4 billion country. And out of 1.4 billion country, only 5% of the graduates, particularly young students, between the age of 19 to 24 has received formal vocational education. South Korea की अगर हम बात करेंगे, there 96% of the young population have received vocational education. तो मुझे लगता है कि vocational education can be a quite game changer for promoting, creativity, research, innovations and all that. While I was working in this Central Institute of Vocational Education, we have revamped the entire vocationalization of school education. We brought employability skills on the board, and we also introduced job-specific skills among the students who are studying from classes 9 to 12. And if you look at the employability skill, we focused on communication skill, ICT skill, self-management skill, entrepreneurial skills, and green skill. Particularly, as you know, we are all focusing on Sustainable Development Goal 2030. And उसके अलावा vocational skills or sector specific vocational skills will all have been introduced among the students and all that one.
So you will see then there are lot many innovations and changes has been suggested in the national education policy. और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें. And if we can well equip our teachers, understanding the significance how teacher can play the role in promoting the scientific temperament, promoting the thinking, critical thinking, innovations among the student will be very, very vital. So I will just stop here, and I'll be happy to answer any questions or observations our uh, dear participants have. Thank you once again. Thank you, Professor Khambayat, for your very nice inputs and for sharing your thoughts with us. You touched upon an important point. When we talk of, we have chosen a topic, NEP 2020, promoting scientific temper and fostering innovations. But what is the ultimate objective? Building a roadmap for entrepreneurship, building a better economy. So wonderful, you placed it very well. What this topic actually aims at, what NEP actually aims at. Thanks for putting your thoughts so well, and I'm sure there are many questions in the minds of people now once we are moving ahead with the topic, and we'll just wait for our last speaker before we take and discuss some questions. Thanks so much, Professor Khambayji, once again. Now we'll have our last speaker, Madam Shilpa Pandey. Before that, over to Anshuman for her introduction. थैंक यू मैम. जैसा आप सब लोगों को पता है कि जो आज हमारा पैनल है दैट इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. दिल्ली से सर संतोष पांडे सर जुड़े, भोपाल से खम्बायत सर, घोष सर कैलकाटा से, और लखनऊ से हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शिल्पा पांडे मैम को. Dr. Shilpa Pandey ma'am is a young scientist. She has done her Masters of Science from Barkatullah University, Bhopal, and PhD from University of Lucknow. Her PhD thesis was on late quaternary evolution of mangrove vegetation in relation to paleoclimate and sea level changes in at Chilka Lake, Odisha, India. Presently, she is working as scientist dean in one of the most reputed institute and unique institute in India, Birbal Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow. Her current research interest includes paleoclimatology, paleoecology, palynology, mangrove dynamics, and sea level changes, as well as ethnobotany. She has significantly contributed on high-resolution paleontological records from eastern and western coastal regions of India to reconstruct the late quaternary vegetation and climatic dynamics and paleo sea level changes, focusing on her lacustrine sediments of central India and central Himalaya to understand the Indian summer monsoon variability during the Holocene period. Dr. Pandey is very dynamic. She has been bestowed with several prestigious awards like Dr. B.S. Venkachalam Memorial Award 2012, Dr. Pratul Chandra Bhandari Award 2009 by Birbal Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow, NASA Young Scientist Award 2014, Regional Talent Award 2017, INSA Bilateral Exchange Award. She has several publications at her credit, and she is also guiding masters and PhD level students. She has been frequent contributor to prestigious international conferences, seminars, workshops in USA, Spain, Norway, China, Ireland, Netherlands, and several other countries of Central and Southeast Asia. Madam, from behalf of IGNOU Regional Center, Bhopal, we welcome you for your deliberations. Dr. Shilpa Pandey, ma'am. Thank you. Thank you, Anshuman sir. And first of all, I would extend my thanks to IGNOU for inviting me on this panel discussion, and especially on the National Science Day. And very good evening to all the esteemed members in this panel discussion. So, as sir has already introduced about myself, that I'm a paleoecologist working on the climate change present and past. So it was a very new topic for me to relate. Definitely the scientific temper, which is a part of this panel discussion, is quite close to my domain of forte. But this National Education Policy 2020 is a little bit differ
for me, and to connect myself with this policy was a little bit difficult, but I tried my best. So it is, as we all know, that the national education policy is a great initiative of government of India, and definitely our Prime Minister Narendra Modi ji has said that this NEP 2020 will lay a foundation of a new India in order to reduce the education and the gap between the education and research. As most of the panelists have said, that the main objective to introduce the NEP 2020 was to develop the scientific temper and the evidence-based thinking in students. Why so? So that they can have the better understanding about the science and about the different aspects of the life, so that they can, if they have the more scientific temperament, then they can be a good and successful, innovative, and good human being, which is very, very important in today's, I could say, the rapidly changing world. So, as I have been asked to mainly focus on two aspects, that how scientific temper can be promoted among students. So, generally, we all know that in our education system, a lot of emphasis is given on theoretical aspects rather than the practicals, as far as the teaching is concerned, science teaching is concerned, I could say. Dr. Ghosh has also said that the teaching is absolutely exam centric in our education system. Instead of, so I think so, the instead of focusing more on the theoretical knowledge, allow the students to understand and to connect the concept from the daily life and through for more hands-on experiments. This kind of activities can help the students to innovate and explore more. As science is best learned by the hands-on experiences, but in most of the schools we can see that verbal explanations are preferred more over investigatory assignments. As Santosh Pandey sir and Rajesh sir has already said, that the more emphasis should be given on the practical aspects. So जैसा कि मुझे भी याद है कि जब मैं स्कूल डेज में थी तो हमारे यहाँ बाल विज्ञान करके हुआ करता था। मैं भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। तो बाल विज्ञान में जनरली एक आप सभी ने गुड़हल का, जासून का फूल के बारे में वो एक्सप्लेनेशन देते थे टीचर्स, और उसको बॉटनी में हो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं। और हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम्स में यदि दे वांट टू एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, दे यूज्ड टू टेक दैट पर्टिकुलर गुड़हल का फूल. So generally, how they differentiate and how our teachers used to explain about it, that कि किस तरह से फूल में मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, कैलिक्स, कोरोला, सेपल्स, जो कि अभी सुनने में डिफरेंट लगता है, किस तरह से उसकी पत्तियों का कलर अलग होता है, इस तरह से बड़ा ब्यूटीफुली वो एक्सप्लेन करते थे, और उसको हम इजीली जाके फिर हमें फील्ड पर ले जाते थे हमारे स्कूल के प्रीमाइसेस में ही, और अदर फ्लावर्स के साथ, तो हम इजीली उसको कनेक्ट कर पाते थे. कहने का मतलब, ये उदाहरण बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि मुझे नहीं मालूम था व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय this masters and graduations, that I will come and join the Birbal Sahani Institute of Fellow Sciences Institute, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल उस फूल के मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पॉलन का होता है. As I am a palynologist, I focuses on the pollen spores, and that is a part of the male reproductive unit, that is the stamen. So कहने का मतलब, यदि उस टाइम पे मैंने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन नहीं किया गया होता, तो I could not correlate much, because being a botanist in this particular field, I have to deal with the geological aspects also, and somehow I could connect my past memories with this present work what I am containing. So what I mean to say is, the practical explanations and the knowledge plays a very, very important role for students to connect themselves in different aspects. Now, Anshuman ji has asked me to tell more about what would be the role of the educational institutions in climate change scenario. As we all know that the world facing the ill effects of the climate change and global warming, there is a great need to find the solutions, sustainable solutions that too, but also efforts has to be made to protect and preserve our nature, that is our earth. Indeed, education is a crucial component of the climate change mitigation and adaptations. As we know that science education can encourage the young minds to better understand and address the impact of global warming. And it can foster, better attitudes to AIDS,
efforts towards mitigating climate change and adapting to a changing environment. As the scientific temper talks about, as everybody has said, that it is a kind of individual attitudes of logical and rational thinking. So more and more questions should come up in the mind of students. For that, we need to, I mean, the educational institutions and teachers, professor has to emphasize and on different aspects, especially if we talk about in terms of the environmental education. So we need to train them. We need to educate students so that they can realize how closely they are linked with the environmental issues and how the environmental issues are very, very much important in their lives and futures, and they can motivate to conceive solutions. Similarly, the students should be encouraged to get involved in science and experimental learning initiatives too. And there is an urgent need, I could understand, to introduce the climate change as a topic of education in schools and colleges level, as it is a global crisis, I could say. In the classroom, the young people can be taught the impact of the global warming, and they can also learn how to adapt to the climate change. So there is a great need to develop the climate literacy among the students, especially central and state education departments. It can be started or initiated, including different chapters on the climate change in science and social science textbooks at schools and college levels. Definitely, it may be there, but the main emphasis while delivering the talks or taking care of the theoretical and the practical aspects on these particular topics. And especially the youth should be deeply concerned with the drastic changes brought by the environmental degradation. Because if the students can easily correlate and themselves with the climate crisis scenario and how they can respond and engage intelligently with it, they can understand with these kind of exercises. Similarly, increasing environmental awareness and education and public awareness campaigns on the climate crisis should be initiated also at the schools and colleges levels. Likewise, young minds can be motivated to take action now because it's a high time for the action now. Recently, I would like to share one episode that in World Wetland Day, I thought that I should uh, go and at the school levels and I should tell them about the World Wetland Day and how the wetland is helpful in mitigating the climate change effects. So I have chosen there is a Asti village है यहाँ पर लखनऊ के पास में ही वहाँ पर मैं गई एक छोटा सा स्कूल है उसमें करीबन 70-80 बच्चों के साथ में एक वेटलैंड मैं उनको लेकर गई पहले तो उन्हें मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया कि आखिर ये वेटलैंड्स होते क्या हैं क्यों ये इम्पोर्टेंट है क्या क्लाइमेट चेंज है किस तरह से वो वेटलैंड को बचा सकते हैं उनसे भी कई प्रकार के प्रश्न किए जब तक मैं क्लासरूम में थी व्हाट आई रियलाइज बीइंग अ साइंटिस्ट बिकॉज मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस तो उतना नहीं है पर वहां जाके मैंने ये रियलाइज किया है एंड आई कैन easily relate what the panelist is talking about and what I am also say emphasizing on the same point that जब तक क्लासरूम में थी तब तक मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे पर जैसे ही मैं सारे स्टूडेंट्स को लेकर वेटलैंड के पास पहुंची और वो जो मैंने एक्सप्लेन किया था धीरे धीरे कुछ एक्टिविटीज थी कि उसको वो फील्ड पर करें और फिर अपनी उस एक्टिविटीज को पूरा करने के बाद मुझे आंसर करें कि क्या क्या चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की यू वोंट बिलीव क्लासरूम में उनका जो एंगेजमेंट था वो डिफरेंट था एंड एज दे केम ऑन फील्ड दे वर टोटली डिफरेंट इतना फ्रीली होके दे वर इंटरेक्टिंग विद मी एंड दे आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सो हम इन यंग माइंड्स को मोटिवेट कर सकते हैं डेफिनेटली उन्हें अवेयर करने की जरूरत है डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के थ्रू हम उन्हें एंगेज करने की जरूरत है Similarly, specific environmental problems at national, state, city, or district levels need to be emphasized also so that the students will be able to understand and relate to the climate issues. Secondly, what I feel like the teaching should go beyond the textbook to simulations. As I said, the field trips, different visiting environmentalists or inviting lecturers who can educate students about the ground reality, basically. For that, they can be taken to some sanctuaries or the rivers adjacent to their areas or the city's drainage system. There we can talk on something, whatever
we have taught during the classrooms. At the same time, the museums are informal learning centers, as we all know that the local science museum should be encouraged to take up climate change also. At the same time, the science education, likewise, the science education, I could say, will help nurture knowledgeable and environmentally conscious and climate skills citizens. And if we can do so in present scenario, and if half of the students also take up the climate issue seriously in future, then it will definitely provide a huge impetus to India's against climate. And as we know that the climate educations can also provide a courses of different disciplines, particularly technical courses, and this will equip students with the skills and techniques needed for building a green jobs ready workforce. So nowadays, the green jobs are very, very attractive sector, and we need to start telling students that it is a valuable career choice and they can come and join hands together. So at last, I would like to say that in India, in our nation, there is no dearth of talent. But the important point is to inculcate the scientific temper in young minds and create the right ecosystem for innovation so that they can go a long way in the technological progress of the nation. So thank you once again. Thank you. Thank you, Dr. Shilpa, for sharing your thoughts with us. We are sure your thoughts based on your experiences. Uh, Thanks for your inputs. Um, uh, you also laid stress on the practical exposure when we talk of learning, and also on practical aspects like field trips, and being your subject climate change, you also touched upon the issues or challenges faced by the world due to climate change, and how youngsters should also understand and take up this topic. Thanks for your message. So I think we had a wonderful panel discussion with an excellent panel. Somehow I felt ऐसा लग रहा था पूरे पैनल डिस्कशन के दौरान, हालांकि हमने ना सीक्वेंस पहले हमारे पैनलिस्ट को बताया था, ना स्पेसिफिक टॉपिक्स उनको दिए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब एक के बाद एक टॉपिक्स को पकड़ के एंड दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद द डिस्कशन. कहीं देयर वाज नो रिपीटिशन ऑन एनी एस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स वर कवर्ड. और जैसे कि पांडे जी ने कहा, ये टॉपिक बहुत ही व्यापक है और हर इसका पहलू को कवर कर पाना इस इतने लिमिटेड समय में संभव नहीं है. लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद हमने कई सारे पहलुओं को समझा, डिस्कस किया और बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा. हमारा समय हमारे पास कम है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स से, एक दो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो मैंने नोट किया हुआ है, लेकिन पहले मैं अपॉर्चुनिटी देती हूँ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कि एक एक करके या तो वो हैंड रेज करे या अपना माइक अनम्यूट करके हमारे पार्टिसिपेंट जिससे वो पूछना चाहते हैं उस रिसोर्स पर्सन का नाम ले और उनसे सीधे सवाल करें. अपना माइक अनम्यूट करें और आप पूछ सकते हो. इस समय 22 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम रिसोर्स पर्सन हम सबको मिलाकर. देयर वर अबाउट 50 पीपल, बट आई थिंक सम ऑफ देम हैव लेफ्ट. समय भी हो गया है, मे बी दैट इज व्हाई दे हैव लेफ्ट. बट तो आप में से अगर कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो इस वक्त अपने माइक्स को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें. मैं एक सवाल पांडे सर से पूछना चाहता हूं, छात्रों के और जो मेरा अनुभव रहा है मध्य प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में कार्य करने का. जब हम विज्ञान की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, तो दिमाग में सबसे पहले लोगों के ये समझ में आता है ये तो कुछ साइंस है, मेरे लिए क्या आवश्यक है, कौन सा मुझे फॉर्मूला देखना है, मुझे एसिड देखना है या फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट करना है. तो ऐसे में आम जनता जो है विज्ञान से, वैसे भी साइंस से सब बच्चे भी डरते हैं कि साइंस में पढ़ना ज्यादा पड़ता है, वो दूरी होता रहता है. तो किस प्रकार से हम अपने छात्रों को, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी सीबीसीएस सिस्टम ग्रेजुएशन किया उसमें एनवायरमेंटल साइंस है और इग्नू ने इसमें क्लाइमेट चेंज सभी के लिए प्रारंभ किया, चाहे वो साइंस का हो या विदाउट साइंस का व्यक्ति हो. तो इस तरह से हम लोग तो लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन जनमानस में
किस तरह से इस तरह से विज्ञान के प्रति रुचि जगाई जाए। जैसे विदेशों में होता है कि बहुत सारे लोग साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन करते हैं बट दे आर नॉट ट्रेन्ड इन प्योर साइंस। तो उस तरह की चीजें हम लोग इंडिया में और खासतौर से जो ये उत्तर भारत के राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो एक पॉपुलेटेड राज्य है और जहां पर साइंस का पर्कुलेशन थोड़ा कम है, उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं सर? इस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये बहुत एक जटिल विषय है और उस पे बहुत सारे कम्युनिकेशन विशेषज्ञ भी लगातार मंथन कर रहे हैं एक जमाने से। उस पर कई दृष्टिकोण हैं। जो मेरी अपनी समझ है छोटी सी, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन से ही मेरा वास्ता है, तो उसमें ये है कि किसी भी विषय के लिए या किसी भी पहलू को रजिस्टर कराने के लिए लोगों के दिमाग में सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है कुतूहल। जब तक आप इंक्विजिटिव नहीं होंगे किसी प्रश्न को लेके, दुनिया के जितने वैज्ञानिक हुए तब बिना प्रयोगशाला के ही वैज्ञानिक हुए। प्रयोगशालाएं तो बाद में बनी, वो वैज्ञानिकों ने बनाई। विज्ञानी बनने के लिए आपको विज्ञान की जरूरत नहीं थी। आपके मन में केवल एक प्रश्न था, वो चाहे प्रश्न जिसके दिमाग में आया हो, न्यूटन के दिमाग में आया, फिर सीवी रामन जिनकी याद में हम ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, तो सारी यात्रा का मूल बिंदु, प्रस्थान बिंदु है कुतूहल। तो जो बेसिक है साइंस को लेके, एक विषय के रूप में साइंस को लेके हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो भ्रम है वो ये है कि विज्ञान का मतलब होता है बहुत ही जटिल विषय है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। उसमें उससे बड़ी भूमिका जो है वो विज्ञान पढ़ाने वालों की और वैज्ञानिकों की भी है। इसमें अगर वैज्ञानिक पैनल पे हैं तो वो मेरे से असहमत नहीं होंगे, क्योंकि मैं काम ही करता हूं उन लोगों के जो मेहनत है उसको जनता तक पहुंचाने का। तो मैं इस दायित्व के निर्वहन में जो कुछ करता हूं वो समालोचना होती है, आलोचना नहीं होती। वो उसमें वैज्ञानिकों का भी बहुत बड़ा रोल है, विज्ञान को ऐसे पोज करने का कि पता नहीं ये आपके बस का नहीं है, मतलब ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है। वो इसमें वो होलियर देन दाऊ एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, कुछ इसका भी झंझट रहा है शुरू से ही। अभी मैं डॉक्टर शिल्पा पांडे की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि वो बच्चों को लेकर खुद गई। ये कोई अध्यापिका नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हैं और आपके पूरे विवरण से पता चला इन्होंने बहुत सारा अपने डोमेन में बहुत सारा काम किया है। लेकिन जब ये बच्चों को लेके गई होंगी तो वो बच्चे इस रूप में ज्यादा उत्सुक होंगे कि ये स्वयं एक वैज्ञानिक होके यहाँ आई हैं और हमें कुछ बताना चाह रही हैं। तो इन्होंने कहा कि ये लेके वो वेटलैंड्स में गई और वहां जाके उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, कैसा है। तो वो बता रही थी कि उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ी, उनका एंगेजमेंट लेवल बढ़ा। तो मुझे लगता है कि खास तौर से हिंदी पट्टी के ये जो इलाके हैं, जिनको किसी जमाने में बड़ी प्रतिष्ठा पूर्वक काऊ बेल्ट कहा जाता था, हालांकि मध्य प्रदेश हमारा कभी भी उस कोटि में रहा नहीं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनको काऊ बेल्ट कह के संबोधित इसी रूप में किया जाता है कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक स्तर पे और माध्यमिक स्तर पे इस रूप में बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं रही हैं। कि मुझे याद है 10वीं में हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री की लैब में कोई एक लैब नहीं था हमारे जिले में जिसमें आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर मिल जाए। वो सब उसमें कुछ ना कुछ मिला रहेगा। एक बीकर भी अच्छे शेप में नहीं था। टेस्ट ट्यूब तो हम लोग जानते ही नहीं थे कि वो होता क्या है ना। वो कागजों पे सब है लेकिन वो कभी हमारे हत्थे नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज की स्थिति में जब अंशुमन जाएंगे, इलाहाबाद वापस जाएंगे और अंशुमन जाके जब उन बच्चों को विज्ञान के प्रति जोड़ेंगे
जो बच्चे विज्ञान से अपने अध्यापकों को लेकर और अपने बाकी अभिभावकों को लेकर इस दबाव में उससे भागते रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो कोई बहुत खास तरह के लोग ही ये कर पाएंगे। दूसरा क्या है, विषय की उपयोगिता को हम ठीक से प्राथमिक लेवल पे नहीं समझा पाते हैं। मतलब अगर आज मैं पूछूं इस पैनल पे, अगर डॉक्टर शिल्पा पांडे नहीं आई होती तो मेरे लिए ये जो उन्होंने 2-4 एरियाज बताए, मेरे लिए तो ये जार्गन्स है। मैं नहीं जानता था कि विज्ञान में ऐसे क्षेत्र भी हैं। तो आप कल्पना करिए उन बच्चों की जो इंटरमीडिएट लेवल पे फोर्स्ड हो जाते हैं अपना विषय चयनित करने के लिए। जब +2 के लेवल पे आप बता ही नहीं पाएंगे किसी को कि जियोलॉजी और जूलॉजी 2 अलग अलग भिन्न विषय हैं, और इनको लेके किस तरह के कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनमें क्या जो है रोचक पहलू हैं जो किसी और विषय में नहीं आते। तो ये जो है मैं समझता हूं माध्यमिक स्तर पे जहां आप इंटरमीडिएट के बाद एक खास विषय ग्रुप चुनने के लिए जब आपकी स्थिति बनती है, तो उस समय आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या पढ़ने से आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके मन में जो जिज्ञासा है वो किस डोमेन में आपको अच्छा करने की ओर ले जाएगा। तो ये भी बताया जाना जरूरी है। और तीसरी चीज जो मैंने कहा, हम सब का रोल उसमें बनता है, पूरा समाज उसके लिए जवाबदेह बने, सबके दिमाग में वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप हो। जहां आप ये जानते होंगे कि कोविड से पहले हमारे मेडिकल डोमेन से ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोई जोन ही नहीं होता था, और कोविड के बाद आपको पता है हर आदमी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाना और निकालना जानता है। इसके पहले इसी के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। डॉक्टर साहब लोग खुद वीडियो बना के डालने लगे कि भैया घर में ही कैसे आप ऑक्सीजन का वो कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस would agree to it. My proposal is I want to see science coming down to the level of a general knowledge. आप विज्ञान को सामान्य ज्ञान की तरफ ले जाएं। जब विज्ञान सामान्य ज्ञान की तरफ जाने लगेगा, मैं विशेषज्ञों के पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस एज ए सब्जेक्ट। जब हर आदमी को ये पता है कि मोबाइल फोन में डेटा सेव कैसे करते हैं, तो ये अपने में उसी स्थिति की ओर ले जाने वाली बात है जिसमें आप धीरे धीरे उसके इंट्रिकेसीज को समझने की ओर बढ़ेंगे। और जब आप इंट्रिकेसीज को समझने की ओर बढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट भी वैसे ही चुनने होंगे, ये सेंस भी आप में आएगी। तो मुझे लगता है कि इन 3 विषयों पे काम करने की जरूरत है। थैंक यू पांडे सर, एंड थैंक यू अंशुमन फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस प्रश्न ने हमारे डिस्कशन के डायरेक्शन को बदला और कहीं ना कहीं नए एस्पेक्ट्स को भी टच किया। थैंक यू फॉर दैट इलैबोरेट आंसर पांडे सर, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि साइंटिस्ट अपने लेवल पे डिस्कवरीज और इनोवेशंस और इन्वेंशंस करते रहे, लेकिन लोकल या पब्लिक के लिए साइंस, let us wait for a time when it comes to the level of general knowledge. I think this is something wonderful that you said. बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैं हालांकि हमारे लोग पार्टिसिपेंट्स किसी ने और कोई और कुछ पूछ नहीं रहा है, तो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। विनय व्यास जी ने मैम हाथ रेज किया है, और हमारे कोऑर्डिनेटर उज्जैन से हैं, उन्होंने भी कहा है, तो ठीक है, तो पहले उनकी बात सुने हम। हेलो जी सर, मेरा सर एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब हमें मतलब ये डिस्कशन में ये कि हमें साइंटिफिक इंक्वायरी की तरफ जाना चाहिए, हमें हर चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, और हमारी मतलब दूसरी तरफ हम देखें तो हमारी जो फेथ होती है वो मतलब हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है कि एक्सेप्ट विदाउट एविडेंस टाइप हो जाता है उसमें। तो मतलब ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें कुछ ऐसा
इस टाइप को चीजों को भी एड्रेस किया गया है क्या? क्योंकि स्कूल में बच्चा जो भी सीखेगा पर घर पर मतलब जो पेरेंट्स है जिनके थॉट सीमेंटेड हो चुके हैं, कंक्रीट हो चुके हैं। शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मेरे क्वेश्चन। नहीं, आपका क्वेश्चन क्लियर है. आई वुड रिक्वेस्ट खंबा जी टू टेक दैट क्वेश्चन. थैंक यू विनय, आपने बहुत अच्छा सवाल का कंसर्न रेज किया है. मैं सहमत हूँ पांडे सर ने जो आप हम सबको बात की, शिल्पा जी ने भी बात कही, ये दोनों से मैं लिंक करके अपनी बात रखना चाहूँगा कि साइंस का जब तक हम परिभाषा नए तरीके से ना सोचें, साइंस फॉर ग्रेटर गुड ऑफ इंडिविजुअल, ग्रेटर गुड ऑफ कम्युनिटी, ग्रेटर गुड फॉर द सोसाइटी, इसको जब तक हम बच्चों के मन में नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है अब हमारे मन में जो अवधारणा है साइंस के प्रति वो विकसित नहीं होगी. उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जैसे सर ने कहा कि हमको एक अवेयरनेस करने की जरूरत है, क्यूरियोसिटी जनरेट करने की जरूरत है. तो मैं दूसरे शब्दों में इसी बात को कहूंगा कि अवेयरनेस तो मैं भी मानता हूँ. दूसरा, एडवोकेसी की बात मैं करूंगा कि क्यों आज के दिन प्रतिदिन में साइंस की आवश्यकता है. साइंस और मैं यहाँ टेक्नोलॉजी का भी बात जोड़ना चाहूंगा क्योंकि वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. तो पहली जरूरत है कि अवेयरनेस, दूसरी जरूरत है एडवोकेसी, ताकि उनको पता चले कि जीवन व्यापन के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. उदाहरण के लिए अगर हम आज देखेंगे हर हर व्यक्ति का कि हमारा दिन शुरुआत होता है टेक्नोलॉजी के साथ, पूरा दिन हमारा टेक्नोलॉजी से गवर्न होता है और वी एंड अवर डे आल्सो विद टेक्नोलॉजी. और आज हमारे पास ऐसे साइंस और टेक्नोलॉजी के विकल्प उपलब्ध है कि वो आपको सुबह उठकर आपको बता रहे हैं कि हाउ गुड योर स्लीप वाज टुडे, यू नो, did you had a good sleep today or not, how is your status on the health and mental health and so many things. तो ये सब आविष्कार का ही परिणाम है, ये साइंस इनोवेशंस का ही तो परिणाम है. तो अवेयरनेस, एडवोकेसी. अब सवाल ये आता है कि केवल अवेयरनेस और एडवोकेसी से काम होगा कि नहीं होगा. वहां टीचर की भूमिका आती है कि ये जो कॉम्पिटेंस डेवलप है, ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करना है, तो वो बच्चों में अटेंड कैसे होगा, इसके ऊपर हमको प्रयास करना है. तो आप देखेंगे ग्रामीण विद्यार्थियों की एक अलग जिज्ञासा होगी, शहरी विद्यार्थियों की अलग जिज्ञासा होगी. तो ये जो अटेनमेंट ऑफ दैट लेवल ऑफ साइंटिफिक एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड will vary from place to place and with the level of the students and all that. और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमने इन चीजों से हासिल क्या किया? तो वहां फिर से शिक्षक की भूमिका आती कि क्या हम असेसमेंट के माध्यम से ये जान सकेंगे कि विद्यार्थियों में उस स्तर की एप्टीट्यूड या एटीट्यूड हमने इनकलकेट की या नहीं की. तो मुझे लगता है इसमें टीचर की ये चारों बातों में भूमिका जरूर रहेगी. सबसे पहले तो टीचर को अपने आप में एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करना होगा दिन प्रतिदिन के हिसाब से. तो मुझे लगता है फिर वही बात आती है कि लेक्चर से तो साइंस नहीं डेवलप होगा. तो वी नीड मोर डिलिब्रेशंस, वी नीड मोर डिस्कशन, मोर एंगेजमेंट, मोर प्रैक्टिस ओरिएंटेड, हैंड होल्डिंग, एक्सपेरिमेंटेशन. ये जब तक हम विद्यार्थियों में नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है ये केवल लेक्चर मेथड से साइंस कभी नहीं डेवलप हो सकता है. जैसे मैंने बटरफ्लाइज का उदाहरण लिया था, शिल्पा मैडम ने बिल्कुल सही कहा कि हमने बच्चों को वहां लेके गए, तो उसी तरह से हमको बच्चों को ये सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज का एक वन ऑफ द इम्पैक्टिंग फैक्टर इज दैट वी आर लूजिंग बटरफ्लाइज इन आवर गार्डन. तो ये लिंक कहाँ से आई? ये जब हम ऐसी सोच लाएंगे तो मुझे लगता है काफी सारे विषय हम अपने आप में उभर कर लेके आएंगे. और आज जो समाज के सामने कई सारे प्रश्न है, कई सारे चैलेंजेस है, और इसका निदान करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो मुझे लगता है आज का दिन हम ये एक प्रण ले लें कि हम हमारे आसपास के जो विद्यार्थी है, शिक्षक है, उनको इसके महत्व के बारे में बताएं. एजुकेशन पॉलिसी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई जो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसी बात को लेकर लिंक करती है, और वो है 10 बैगलेस डे. विद्यार्थियों को स्कूल में बैग लानी ही नहीं है, जबकि उनको रियल फील्ड में जाना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, ये जानने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज द रियल वर्ल्ड, व्हाट पीपल रियली डू, हाउ पीपल लर्न लिविंग, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड वगैरह.
ये सब बातें जब बच्चों के सामने आएगी, then they will start understanding the value of all those things in their day-to-day life and all that. तो काफी सारी बातें मुझे लगता है हमको सर माइक ऑफ हो गया आपका सर। सॉरी तो ये जब तक हम नहीं लाएंगे, मुझे लगता है बहुत सारे विकल्प हम लोग नहीं कर पाएंगे। I hope Thank you, Ambal ji. Yeah, आवाज आ रही है, and I think that was a wonderful answer. More of engagement required, definitely. मैम Apart from एक this, क्वेश्चन एक सर का है। मेरे ख्याल से पांडे जी शायद कुछ ऐड करना चाहते हैं। प्लीज अनम्यूट करके बोले। मैं क्विकली, ये जो प्रश्न था बच्चे का या जिनका सज्जन का, उसमें उनका प्रश्न ये था कि फेथ और रीजनिंग को हम कैसे क्या करें। वो मूल प्रश्न उनका जो था वो ये था कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, और वहीं घर में जो है वो भगवान की आरती उतारो और ऐसे बैठो। शायद वो यही कहना चाहते थे। मूल प्रश्न में ये है कि आप जो है फेथ को संस्कृति का हिस्सा माने। फेथ जो है वो एक कल्चरल एसेट है, वो उसको आप किसी और डोमेन से जोड़ के ना देखें। तो कल्चर हमारा ये है कि हमारे माता पिता के चरण छूने हैं, तो आप छुएं, इसलिए छुएं क्योंकि आपके वो माता पिता हैं, इसलिए नहीं कि उनको रमन मैग्सेसे मिला है या सीवी रमन प्राइज मिला है। वो माता पिता होने के नाते आदर के अधिकारी हैं और ये आदर उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन आप साइंटिफिक टेम्पर वहां दिखाइए जहां पर कोई आदमी नाहक में आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि हम आपको एक बूटी दे रहे हैं और आप ये बूटी लेने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। तो वहां पर आप ये जरूर अपनी वैज्ञानिक चेतना जो है उसका प्रयोग करें और ये देखें कि क्या ये व्यक्ति पात्र है, उसकी बातों की सत्यता जांचने का आपके पास कोई तरीका है तो उस तरीके से आप जांचिए। वरना रोज ईमेल आता है, अगर एक दिन की ईमेल मैं आपको बताऊं तो अब तक मैं भारत के धनी लोगों की लिस्ट में 10वें नंबर पर होता है। रोज कहीं ना कहीं से $10 मिलियन, $17 मिलियन ट्रांसफर करने की बात होती है मेरे अकाउंट में। तो ये वही लोग हैं जो रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकार खोज लेते हैं। मतलब आज के जमाने में जब फ्री में प्रशंसा कहीं नहीं मिलती, तो आप बताइए $10 मिलियन की लॉटरी ऐसे ही आप कौन से मोदी जी हैं कि आपको अचानक पूरी दुनिया में लोग जान गए और आपको नाइजीरिया से कोई जेम्स डेफसन लिख रहे हैं कि आप जो है, आपका इतना धन दिल्ली कस्टम में पड़ा हुआ है, आप इतना पैसा दे के उसको छुड़ा लीजिए। और लोग रोज छुड़ाने जाते हैं और रोज फिर हम लोग छापते हैं कि ये घटना हो गई। तो साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये टेम्परामेंट हुआ, उसको आप भगवान से, उसको आप अपने घर में वो जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, परंपरा से हो रही हैं, उसके साथ इसको कॉन्फ्लिक्ट में देखने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुल जी हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से, देहरादून से जुड़े हुए हैं, उत्तरांचल से। वो शिल्पा मैम से कुछ पूछना चाहते हैं। अंशुल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपने मैसेज तो टाइप किया है। मैडम शायद चैट बॉक्स पे मैसेज उन्होंने किया है। अंशुल भासावर जी हैं, वो ही इज फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून, एंड ही वांट्स from Shilpa ma'am, how can we give the knowledge and promote about other things subject like environment and climate change apart from conventional subject? How? Can you repeat the question? The question is that how they can give knowledge to promote other things, other subjects like environment and climate change apart from conventional subject. जितना मैं ये प्रश्न को समझ पा रही हूँ कि मेरा ये मानना है कि हम चाहे एनवायरमेंट हो, क्लाइमेट हो या कोई भी साइंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं या उसके बारे में हम बता सकते हैं, उसके लिए बेसिस जो होना चाहिए आज की डेट में वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑन ग्राउंड ट्रूथ होना चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज लेवल पर हो, स्कूल लेवल पर हो, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर हो, यहाँ तक कि मुझे अब तो ये भी लगने लगा है, कुछ आउटरीच एक्टिविटीज के तहत मैंने कुछ समझा है कि टीचर्स को भी ये जरूरत है
कि हमें ग्राउंड पर आके कैसे चीजों को कनेक्ट करके और किस तरह से हमें चाहे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे, क्लाइमेट चेंज या डिफरेंट अदर पोल्यूशन एस्पेक्ट्स पे बात करनी है, या उसे समझाना है, या स्टूडेंट्स को समझाना है, या कुछ साइंटिफिक क्वेश्चंस को एड्रेस भी करना है, सो वी नीड टू कम ऑन ग्राउंड। हम सभी जानते हैं कि आजकल जीआईएस टेक्नोलॉजी के जमाने में जीआईएस रिमोट सेंसिंग से बहुत सारी चीजें हम लैब में ही बैठे हुए, घर पर बैठे हुए एक्सेस कर लेते हैं, और बहुत सारी चीजों के लैंड फॉर्म्स, लैंडस्केप, लैंड कवर चेंजेस, लैंड यूजेस के बारे में बता देते हैं। अभी कल की ही घटना है कि हमारे यहाँ आरएसी हो रही थी, तो उसमें हमने एक मैप शो किया, हमारे ही एक सीनियर साइंटिस्ट ने, जो कि मैप जो था रिमोट सेंसिंग के द्वारा, मतलब वो आरजीआईएस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो बनाया गया था। एक सीधा प्रश्न आया सीनियर से कि क्या आपने ग्राउंड पर जाकर वहां के लैंड फॉर्म्स को समझा है? तो ये बोला गया कि हाँ, फील्ड वर्क में तो हम जरूर गए थे, पर हमने वहां के लैंड फॉर्म्स को जॉट डाउन नहीं किया, बट हमने सैंपल कलेक्शन किया है, एंड बेस्ड ऑन XYZ मैप वी हैव प्लॉटेड दिस जियोलॉजिकल मैप। तो सीधा सीधा कहने का बात यह है कि चाहे एक्सपर्ट्स हो, या जियोलॉजी के एस्पेक्ट में हो, बॉटनी एस्पेक्ट में हो, या अदर डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ साइंसेस हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एट प्रेजेंट सिनेरियो इज द ग्राउंड वर्क। अवेयरनेस भी यदि क्रिएट करनी है तो हमें ग्राउंड पर जाकर या फील्ड्स पर जाकर, जैसे मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स को यदि हम फॉरेस्ट के बारे में बता रहे हैं, यदि पोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, या हम वेटलैंड्स हैं, एन नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स आर देयर, रिवर्स के बारे में बता रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पे है, क्या उसका फॉरेस्ट पे है, क्या हम नेचर बेस्ड सोल्यूशंस ला सकते हैं, कोई भी एस्पेक्ट पे यदि हम स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक बात कर रहे हैं, तो क्या हम 365 दिन में, क्या 15 दिन, 20 दिन ऐसे नहीं निकाल सकते कि हम उस लैंडफॉर्म्स पर जाकर उनको प्रॉपरली बैगलेस, जैसे राजेश सर ने बात किया कि बैगलेस एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, तो क्या हम उसको इनिशिएट नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस करने के लिए आउटरीच एक्टिविटीज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स होनी चाहिए। और जैसा कि ये प्रश्न WII से है, तो ये तो काफी प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूट है, इसमें कई प्रकार की ऐसी आउटरीच एक्टिविटीज, चाहे वो गंगा प्रोजेक्ट रहा हो, चाहे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात रही हो, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता रहा हो, सभी चीज इस इंस्टीट्यूट से होता है, एंड दे आर वेरी प्रोएक्टिव पीपल, एंड everyone, those who are attending this panel discussion, especially students, they should visit to the WII, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो ये बताता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात है, ये कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं, एंड they should be a part of it. I think so I would be able to justice this question. Thank you, Dr. Shilpa, for that answer. I'm not sure what the student wanted, like what the participant wanted, but definitely thank you for sharing your thoughts. एक क्वेश्चन, इज प्रोफेसर जसवंत सोखी ऑन द कॉल? जसवंत मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? Okay. The question is, I had noted down 2-3 questions, but I think we'll take just one question in the interest of time and close. This is, मैडम ने वसुदेव कुटुंबकम की बात की, हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। जब हम यहाँ आज, इस बार का हमारा थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, एवरीथिंग इज कोरिलेटिंग सो मच। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का सवाल है कि फॉर साइंस एजुकेशन एज वेल एज रिसर्च, ईच कंट्री हैज इट्स ओन पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस. Do we see a future in which science education and research will have global regulations? I will request all of you to take that question one by one, starting with Pandey ji, and then followed by Khambai ji and Shilpa ma'am, and Professor Jaswant, if you're there, and Dr. Ghosh. And the second part of the question, would it be right to have global regulations for science, and or it is better that it continues as context specific regulations? I mean, to me, this is the question of this panel today. I am so glad to have this question, and it is a question from a very sharp mind. So, a most welcome question. Now, coming to the question,
talking about science being globally regulated or monitored, what I foresee as basically as a journalist, as a mass communicator, the day is not far when we see a forum in the lines of UN, as we have this geopolitical setup called United Nations. I think in coming future, uh, all the challenges that we are faced today, they call for a global intervention. Now to that, अगर दिल्ली में एनसीआर में पीएम 2.5 की प्रॉब्लम है तो उससे राजस्थान इफेक्टेड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो दो देशों के बीच में जो सीमा रेखा है, वो अपने में किसी भी ऐसे चैलेंज को अपने देश में रोके रखेगी, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो जितने ये इश्यूज हैं, समंदर अगर भारत में अरेबियन सी पोल्यूट होता है तो वो कुवैत, ओमान से लेकर पूरे इंडियन ओशन तक, पूरे कैरेबियन सी तक को इफेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन चॉइस का है ही नहीं, ये क्वेश्चन जो है इमीडिएट ज्वाइन हैंड करने वाला सिचुएशन है ये। वैसे ही आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन के जितने फॉर्म्स की बात आप करें, उन सब में लोकली आप अपना कार्बन फुटप्रिंट भले ही लोकली एड्रेस करते हो, क्योंकि आप अपनी यहाँ की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट आपका इंप्रूव हुआ, ये आपके पड़ोसी के भी इंप्रूवमेंट से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। आपके यहाँ इंप्रूव हो गया और बांग्लादेश में वो जैसे का तैसे पड़ा है, उसके यहाँ फॉसिल फ्यूल वैसे ही जल रहा है, तो आपका वो इंप्रूवमेंट किस सीमा तक आपके काम आएगा, ये डिबेटेबल है, ये क्वेश्चनेबल है। तो मैं ये देखता हूं कि भविष्य में यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पे केवल साइंस के लिए एक ग्लोबल बॉडी होगी जो प्रायोरिटीज तय करेगी। अभी भी यूनाइटेड नेशंस के पार्ट में ही, अभी राजेश सर जो बात कर रहे थे, ये G20 में भी, और जो हमारे जो गोल हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030, वो भी अपने में एक ग्लोबल ही अरेंजमेंट है, वो लोकल अरेंजमेंट नहीं है, वो ग्लोबल ही अरेंजमेंट है। तो इस रूप में तो ये हो रहा है। बाकी मैं चाहता हूं कि रिसर्च प्रायोरिटीज को भी लेके दुनिया में एक ऐसा फोरम हो जो ग्लोबली तय करे कि किस एरिया में सबसे ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे हमने देखा पेंडेमिक के टाइम में सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स वर पुट ऑन होल्ड, केवल और केवल वायरोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें जो है फोकस पूरी दुनिया का आया था, सब लोग केवल उसी पे काम कर रहे थे। तो वैसे ही अगर हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं दुनिया के उन चुनौतियों को जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एक रोल प्ले करना है, उसकी लिस्टिंग के लिए ग्लोबल बॉडी होगी, ऐसा मैं मानता हूं, और ये 2030 तक हो जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू पंडित सर, वेल सेड। खंबाई जी। I will also join with Pandit sir's observation. I think this question is very very important. जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ग्लोबल एक ओवरऑल गुडनेस के लिए जब हम साइंस की परिभाषा करेंगे, साइंस के प्रति ग्लोबल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे, फॉर अ ग्रेटर गुड की जब हम बात करेंगे, तो इसकी परिभाषा अलग होगी इस सवाल की। और G20 जो है ये एक प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए उपलब्ध जो किया गया है, वो किसके लिए? वन कंट्री, मतलब वन अर्थ, वन फ्यूचर। तो ये तो ग्रेटर गुड के लिए हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है साइंस की व्यापकता और बढ़ानी होगी हमको। और आज जो समस्याएं हमारे सामने हैं एज अ वन प्लैनेट, तो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। आपने बिल्कुल सही कहा पांडे सर ने। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर एक फ्यू मिनट्स का, फ्यू सेंटीमीटर्स का भी अगर सी लेवल इंक्रीज होता है, तो आने वाले दिनों में मालदीव जैसी छोटी जगह है, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, विल वैनिश फ्रॉम द एंटायर अर्थ। तो क्या इसमें मालदीव की परेशानी है? मतलब इज दे आर द वन कंट्रीब्यूटिंग टू दिस क्लाइमेट चेंज? नॉट एट ऑल।
they have a minimal contribution to this one, but such a scale requires international partnership, international collaborations. और साइंस ऐसी एक विधा है जहां पर हमको आगे बढ़कर आगे आना होगा. There are many frontier areas where we will need expertise which may not be available locally or nationally and all that. So for a bigger picture, we need more collaborations and all that. और ये चीजें धीरे धीरे उभर रही है, चेंजेस आ रहे हैं इसमें, और बहुत व्यापकता से. जैसे हम कोविड वैक्सीन की अगर हम बात करें, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद दिस सॉल्यूशन. लेकिन जैसे हमने कहा ना कि फॉर अ ग्रेटर गुड इंडिया हैज प्रोजेक्टेड इट्स ओन इमेज कि इट इज नॉट फॉर आवर ओन सेल्फ, फॉर आवर ओन पीपल, but for the goodness of the planet. So many countries have been benefited because of our scientific solutions and all that. तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि रेगुलेशंस की अपनी परिभाषा है, लेकिन जब हमारा व्यापकता होगी सोच की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, देन प्रोबेबली विल हैव अ डिफरेंट सॉल्यूशन. क्लाइमेट चेंज की बार-बार बात हो रही, मैं एक लास्ट में अपनी एक बात मुद्दा रखना चाहूंगा कि हमारे कैंपसेस को देख लीजिए, स्कूल के कैंपस ले लीजिए, इंस्टीट्यूशनल कैंपसेस की बात करिए, तो हम ग्रीन कैंपस को परिभाषित करने की आवश्यकता है. ग्रीन कैंपस डजंट मीन दैट वी ओनली प्लांट ट्रीज, but how we recycle the water, how we utilize the energy, कितनी renewable energy, कितनी non renewable energy से होता है, waste management कैसा होता है. That is what we have to inculcate when we talk about climate and all green and everything we talk in institutions. तो ये scientific solutions campus के through होंगे, और जब बच्चे देखेंगे कि हम within the campus itself we are able to solve small issues and all that, so this will have very impact. Second, I would say about green curriculum. केवल किताबों की एक जस्ट मिनट आए green curriculum. So we have to inculcate greening aspect into our educational curriculum. Green research has to be brought into the board. ग्रीन कम्युनिटी हमारा अपना नहीं है, हमारे आसपास की कम्युनिटी में भी हमको क्लाइमेट के प्रति अवेयरनेस करने की जरूरत होगी. और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट है ग्रीन कल्चर. जब तक हम अपने आप में ग्रीन कल्चर नहीं लाएंगे, हमारी दिन प्रतिदिन की जो जीवन शैली, जब तक हम उसमें ग्रीन कल्चर को इनकलकेट नहीं करेंगे, आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट. सो देयर आर मेनी फैसेट्स ऑफ दिस क्वेश्चन दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू इट, but I'm sure as we are opening up new frontiers through the science and technology, it should not limit to restrict to regional boundaries or national boundaries, but it should scale up to international boundaries and all that. Thank you. Thank you, Professor Khambaji. Over to Shilpa ma'am to hear your thoughts. जैसा कि पांडे सर ने बताया और राजेश सर ने बताया कि ग्लोबल लेवल पर हमें सोचने की, और ये थीम भी है नेशनल साइंस डे का कि ग्लोबल वेलबींग और ग्लोबल साइंस एंड ग्लोबल वेलबींग के बारे में बात करना. तो डेफिनेटली जैसे कि G20 का जिक्र आया, साथ ही साथ UN का जिक्र आया, ऐसे ही हम देख पा रहे हैं कि IPCC की जो रिपोर्ट है, जिसमें कि इस बार का IPCC की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा जो फंड और सबसे ज्यादा जो एम्फोसिस दिया गया है वो क्लाइमेट चेंज पर ही है. और क्लाइमेट चेंज पर भी किस पर दिया गया है? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए करने वाले जो भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पर हम ध्यान दे सकते हैं उस पर किया गया है. और उसमें से भी सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज से एक सज्जन, उनसे मुझे पता चला कि मैंग्रोव से रिलेटेड सबसे ज्यादा फंडिंग हुई है. और not only in India but other parts of other countries of the world में भी ये फंडिंग ज्यादा हुई है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पर वर्कआउट करने के लिए. अब प्रश्न ये आता है कि ग्लोबल यदि प्रॉब्लम है तो ग्लोबल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, किस तरह से उसे एड्रेस करना है उस पर भी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो गए हैं ग्लोबल लेवल पर डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा. बट उसे एग्जीक्यूशन तो डेफिनेटली हमें लोकल से ही स्टार्ट करना है. लोकल देन रीजनल देन इट विल स्टैंड अप टू द ग्लोबल लेवल. और ये सभी कंट्रीज की जिम्मेदारी है. जैसा पांडे सर ने बताया कि यदि हम अपने लेवल पर लोकल लेवल पर यदि मिटिगेट कर लेते हैं कुछ चीज, तो जरूरी नहीं है कि पड़ोसी ने किया हो. पड़ोसी इन द सेंस कि जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान एंड एडजेसेंट कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से यदि पहल नहीं हो रही है और हम मिटिगेट करने में भी काफी हद तक
बढ़ जाएंगे आके, तो क्या ये पर्पस सॉल्व करेगा? पर नहीं करेगा. बट द पॉइंट इज दैट अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट कैन कंट्रीब्यूट और इट कैन हेल्प टू मिनिमाइज. दैट इज वन पॉइंट. सेकेंडली, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की राजेश सर ने बात की कि यदि फ्यू मिलीमीटर्स भी बढ़ता है तो जिस कंट्री की गलती भी नहीं है उसकी सजा उसको मिलने की कगार पे वो आ जाएगा. तो ये सिर्फ मालदीव्स के केस में ही नहीं, हमारा यदि इंडियन कोस्ट लाइन देखें तो काफी बड़ी है, 7500 किलोमीटर की है, जिसमें से ज्यादातर जो कोस्टल लाइवलीहुड्स पर डिपेंड करने वाले लोग हैं. हम तो गंगा प्लेन या सेंट्रल प्लेन में बैठते हैं तो हमें उतना टेंशन नहीं होता है. और जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, डिफरेंट टाइप के डिसास्टर्स भी हो रहे हैं, चाहे वो अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स है हिमालयाज रीजन में, तो ये भी क्लाइमेट चेंज का ही असर है. तो अब हमारा कहने का मतलब ये है, या हमें ध्यान ये रखना होगा कि हमें लोकल लेवल पे जितने जल्द से जल्द हम जो सोल्यूशंस निकाल सकते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के पर्सपेक्टिव में, वो हमें करना होगा. और इसमें अब वो समय गया, मेरा ये मानना है, आई डोंट नो वेदर अदर पैनलिस्ट विल एग्री एंड अदर पार्टिसिपेंट्स विल एग्री, कि अब सोचने का भी समय नहीं बचा है. मतलब इस लेवल पर बात आ चुकी है. आईपीसीसी की यदि रिपोर्ट, जनरली हमारे देश में ये भी चीजें हैं कि कुछ चीजें फ्लोट होती हैं, लाइक G20 का इंडिया का जो मोटो है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, बस ये सुन लिया गया है, कुछ लोगों को समझ में आया होगा. ज्यादातर हमारे भारत के अंदर चाहे रिसर्चर्स हो, चाहे एकेडमिशियंस हो, स्टूडेंट्स तो बेचारे बहुत बाद में आते हैं, पहले उनकी भी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द आईपीसीसी, यूएन रिपोर्ट्स और G20 की रिपोर्ट्स, या क्या ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए गए हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, ये हम लोगों की खुद की भी अंडरस्टैंडिंग होती है. सबसे पहले हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिठाना होगा, जल्द से जल्द बिना टाइम स्पेयर किए हुए रिसर्चर एकेडमिशियंस को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर डिस्कशन करना होगा, चाहे वो एनजीओस हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालने में तत्परता दिखानी होगी. घर के लेवल पर भी हम शुरू कर पा रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड. अपने अपने प्रीमाइसेस में हम ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांटेशंस करते हैं, यदि आपने ध्यान दिया होगा, तो क्लाइमेट चेंज इज नॉट गोइंग टू बी मिटिगेटेड बाय द प्लांटेशन ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स. हम घर पर भी क्या कर सकते हैं, लिमिटेड दायरे में हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स ही लगा सकते हैं. हम अच्छी अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं, उसमें भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स ही लगा सकते हैं. पर क्लाइमेट चेंज या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, वो कुछ इस तरह की स्पीशीज हैं जो कि उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है. तो उन चीजों की भी अवेयरनेस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट एनजीओस तक हमें पहुंचानी होगी. अभी तो यही इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं मालूम है. पुराने जमाने के लोग या हमारे बड़े बुजुर्ग ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, ज्यादा उनके पास साइंटिफिक टेम्पर था कि उन्हें इतना तो मालूम था कि पीपल, नीम और इस तरह के जो पेड़ हैं उन्हें लगाया जाए अपने सराउंडिंग्स में तो वातावरण अच्छा रहता है. तो क्या हम ये नहीं कर सकते? सिटी अर्बन उसमें भी लखनऊ में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं जिनको सीमेंटेड, उसको कुछ एक टर्म बोलते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म ऑफ दैट, उसकी जो सराउंडिंग्स है कैनोपी के जस्ट नीचे उसको सीमेंटेड कर दिया गया है. थोड़े दिन में हम देखते हैं थोड़ी सी भी तूफान वगैरह आता है और बड़े बड़े पेड़ धराशाही हो जाते हैं. तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि यदि उनकी जो पेरिफेरी को यदि हम सीमेंटेड कर देंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि नेचुरल तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं, वो सब चीजें भी इम्पैक्ट करेंगी. जो चीज हम लगा नहीं पा रहे हैं, जैसे जो चीज हम ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं, पर डिग्रेडेशन इज इंक्रीजिंग फास्टर रेट देन द एफॉरेस्टेशन. तो ये एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस प्लेटफॉर्म के तहत, मतलब ये पैनल डिस्कशन के तहत आप सभी से मैं आग्रह भी करना चाहूंगी, बीइंग सो जूनियर रिसर्चर, कि आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसे वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स जो कि ग्राउंड लेवल पर कराए जाए, स्कूल लेवल्स पे कराए जाए. हम जैसे चंद लोग बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं. सभी अपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं. क्या हम आगे तक ले जा पाते हैं? किस एक्सटेंट तक ले जा पाते हैं? 1-2% इज नॉट सफिशिएंट टू एड्रेस ऑल दीज बिग मेजर ग्लोबल इश्यूज. जब हम अपने लेवल पर ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम ग्लोबल इश्यूज को ग्लोबल लेवल पर किस तरह से हम समझ सकते हैं? तो समय बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है एंड इट्स अ हाई टाइम फॉर द एक्शन नाउ. चाहे वो क्लाइमेट एक्शन नाउ के टर्म में बात करें, पर वी शुड कम अप बाय एनी मींस. So this is all about what I wanted to say. Thank you, Dr. Shilpa. I think mitigation of climate change in itself is a big topic, and this was beyond our topic anyway. But I understand that you're very passionate about it.
and therefore it was glad to listen to you, because nevertheless it is an important topic as far as the globe is concerned. So See, but you one were point, panelist, therefore we got an opportunity to listen to this topic also, although it's going beyond the main topic, and that is why I think we have crossed 2 hours now. one thing I would like to add on, ma'am, before we end up this event. Yeah. This is not beyond your session. Must be sounding beyond. बट कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्पर राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड से ही जब स्टार्ट होगा, तभी वो चीजों को सेंसिटाइज हो सकते हैं और चीजों को एड्रेस कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं इट इज मोर रिलेटेड विद टुडेज पैनल डिस्कशन आल्सो. Yeah. I think what you're saying, I understand what you're saying or arriving at. There are many issues which affect each and every one of us, and climate change is definitely one of the main issues. Definitely one of the main issues, and we are talking of instilling these thoughts in the minds of very young children. जैसे कि पांडे जी ने कहा, प्रारंभिक शिक्षा के स्टेज पे ही अगर उनको इन बातों का बीज उनके मनों में बोया जाए, तो ये एक एस्पेक्ट भी कई और विषयों के साथ साथ उनके मनों में डालना ही चाहिए, जो करंट हमारे चैलेंजेस है. डेफिनेटली. So thanks a lot to each one of you. I'll just mention the takeaways very briefly. Although there are many points that we have discussed, it was a very rich discussion. Wonderful to have each one of you on the panel, and thanks a lot. So the main takeaways: experiential learning and practical exposure, field experience is the key when we speak of science education. There is a need for integrity when we talk of science learning. Then, as we just discussed, there's a need to sow the seed of science learning and understanding in the minds of young children, so as to promote scientific temper and foster innovation in them in the future. Also, looking at NEP to increase scientific temper and foster innovation. The objective of this is to create a roadmap for entrepreneurship and startups, as Kambaji said, leading to a better economy for our country and the world at large, if we think that way. And one thing which has come up in the discussion is engagement with the public is also very important, which we have not been able to do much. Being a journalist, being a media person, I should say broadly, Pandeji must be able to do it in a better way, because we are only able to reach out to our students and through them to their families probably. In our conferences also, the people who attend are teachers, fellow researchers and students. But reaching out to the public as such, that is having sessions for the public, for the community, that is also important. Here I think there has been a start, we can say, because for innovation, many of our university teachers and researchers are innovation ambassadors also. So we are going out into the community. We have also started doing that, but we have to take that forward very much, because public awareness is also very important. जैसे कि पांडे जी ने कहा, उसको बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट जो आम आदमी के अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, ऐसा ना बनाकर let us try to bring it to the level of general knowledge. I think I like that point very much, to bring it to that level. And finally, when we talk of global science for global well-being and the whole world being one, and the future of the world being one, then in that case, there is the possibility of having global regulations in science is the need of the hour. So I think we can stop this discussion on that note, and really appreciate your presence throughout for such a long time. Thanks a lot to each and every participant, Khambai ji, Santosh Pandey ji, Shilpa Pandey ma'am, Professor Jaswant Sokhi, and Dr. C.K. Ghosh. All of you, in spite of your busy schedules, have joined us. All our participants, academic counselors, coordinators, IGNOU fraternity, students who all joined us for some time of the program.
Now to close with the formal vote of thanks, I call upon Anshuman. थैंक यू मैम। सबसे पहले I would like to thank you for summarizing the things in a so scientific and crisp manner, which can be a outcome of today's meeting. मुझे बहुत ही सौभाग्य है कि आज मैं धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर मुझे मिला है और अपने हृदय के अतल गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर C.K. घोष सर का, जो इस समय एनसीईआरटी नई दिल्ली में एक विशेष कार्य के लिए उपलब्ध है वहां पर, और उन्होंने वहां से अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल के क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की इस पैनल डिस्कशन में अपना वक्तव्य रखा। उनका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर जसवंत सोखी मैम का, जो सदैव से साइंस के प्रति उनके एक बहुत विचारधारा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बॉटनी में दिया है और उन्होंने उनको जब भी आमंत्रित किया गया है, चाहे वो इस तरह का आयोजन हो या विद्यार्थियों की सहायता, उन्होंने तत्परता से किया है। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अग्रज और हमारे सीनियर संतोष पांडे जी सर का, जिनसे कल ही मेरी बात हुई और पता चला कि वो प्रयाग की धरा से उन्होंने भी पढ़ाई की है और वो मेरे अग्रज है मेरे विश्वविद्यालय के। सर, आपने जितनी सरलता से हिंदी में और जितनी स्पष्टता से बात कही, विशेषकर काऊ बेल्ट की जो आपने बात कही, और निडरता से विज्ञान के पक्षों को रखा, और जो बाद में आपने कंक्लूड किया कि किस तरह से जनरल नॉलेज साइंस के लिए किया जा सकता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आज हम इस मंच पर वचन लेना चाहते हैं कि भविष्य में भी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र अगर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजित करेगा तो आपका समय और आपका ज्ञान हम लोग अवश्य लेंगे। मैं खम्बायत सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सर अपने अवकाश में अपने गृह जनपद महाराष्ट्र में है, फिर भी सर ने कहा कि वो जरूर से इसमें आएंगे और सर हमेशा आते हैं। और जो वोकेशन, साइंटिफिक टेम्पर और उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जोड़ा, उसमें बहुत ही संक्षिप्त में सर ने जो बताया और कैसे ये कर सकते हैं, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आभार देना चाहूंगा डॉक्टर शिल्पा पांडे मैम का, जो लखनऊ से हैं और उन्होंने अब उनका विषय थोड़ा सा अन्यत्र है क्योंकि वो उस पर काम करते हैं जो अब जीवित नहीं रहे, यानी फॉसिल्स। तो फॉसिल्स पर काम करने वाले लोगों को ये पता है कि अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो कल को ये भी जो आज के स्पीशीज हैं वो फॉसिल में परिवर्तित हो जाएंगे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया अपने एक्सपर्टीज को, और जो प्रेजेंट आज का पैनल डिस्कशन था, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पाके हम लोग बहुत अच्छा लगा कि आप उस संस्था से आए हैं जहां से जो प्रोफेसर बीरबल साहनी है वो भी उसी संस्थान से, उसी लैब से हैं जहां मुझे भी अवसर मिला है बैठने का और वहां पर काम करने का। प्रोफेसर बीरबल साहनी वाज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, you know very well. So we are glad to have you on this board. मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों का, हमारे क्षेत्रीय केंद्रों से जो लोग जुड़े, क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर, क्षेत्रीय केंद्र कोचीन, क्षेत्रीय केंद्र विशाखापट्टनम से और भी बहुत सारे क्षेत्रीय केंद्रों से लोग जुड़े, विद्यार्थी जो कि देहरादून से जुड़े हैं, विनय व्यास जी और अंशुल जी जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े और इस पूरे चर्चा में आपने पार्ट लिया, आप सभी का धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर बिनी टॉम्स मैम का, हमारे साथी डॉक्टर सुभाष रंजन नायक का, डॉक्टर स्मृति गार्गव का, डॉक्टर कुमुद वर्मा का, डॉक्टर चंद्र प्रकाश मुर्सिया जी का, जिनकी वजह से ये सारे कार्यक्रम को आयोजित करवाया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो हमारे पैनलिस्ट जो पहली बार जुड़े हैं, कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने क्लाइमेट चेंज पर एक सर्टिफिकेट प्रदान किया है। उसके दो पार्ट रखे हैं, एक जो विज्ञान के लोग कर सकते हैं और एक जो सामान्य लोग कर सकते हैं, उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा एक अभी एमए इन एनवायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया है, जो एक जनरल आदमी, जर्नलिस्ट एजुकेशन वाला, बीए वाला जर्नलिस्ट भी वो करके और इन सब विधाओं के बारे में बहुत विस्तार से
जान सकता है। तो इग्नू का ये रोल ऐसा है कि जन जन तक विज्ञान पहुंचाया जाए, और अपने बहुत सारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान के हमारे पाठ्यक्रम चलते हैं, लेकिन जो एक जो जनरल एजुकेशन है जिसको ग्रेजुएशन कहते हैं, इग्नू बहुत पहले से पिछले 30 वर्षों से फाउंडेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जब से सीबीसीएस आया है तो उसमें एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, और बहुत ही तन्मयता से हमारी जो एनवायरनमेंट के बुक है उसको वो भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, ई ज्ञान कोश पर आप लोग देखिएगा, तो विद्यार्थियों को पूरा मौका दिया जाता है कि इन उसको समझे और इस पर अपना कार्यान्वयन करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोग का एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद और आभार देता हूं। नमस्कार। आप लोगों ने इतना समय दिया, धन्यवाद। मैम अगर आदेश हो तो अब हम लोग इस मीटिंग को बंद करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स सो मच। थैंक यू। थैंक यू पांडे सर। मैम ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप क्यों?